well, good morning to all of you. It is a great pleasure to the Department of Economics that the Department of Economics is going to organize post-budget discussion today in this August gathering. On behalf of the organizing committee, I welcome you all. Respected Honorable Vice Chancellor in charge, Professor Dhanpat, Professor Ajitava, Raychaudhuri, eminent economist, emeritus professor, Professor of Adams University, who was the former head and dean of Ajitava University also. Eminent another guest of honor, Dr. Dhanpat from Agarwal. He is a director of Indian Institute of Trade, Kolkata. And our register will be coming, will be joining later due to some hectic schedule. So he has not come till he will come, and just he has mentioned me, he has told me he will be back. And our finance officer, Sri Devasis Pal, Professor Prof, Madam, Department of Economics, all other dignitaries present with the audience, our colleagues, teachers, non-teaching staffs, and my dear students and research scholars. Union budget, that is a common many interests. So, irrespective of different income category people, different occupational group, age, gender, caste, religion, every section of the people eagerly waiting for the day when Finance Minister of India will enter into the parliament, taking a close briefcase containing with the budget proposal and deliver her address. Members of the Treasury bench always lead a clap during the budget speech. Though the members of the opposition bench expresses their unhappiness, this is the common phenomenon, common situation and that we are observing. A group of common men who are the active supporters of the political parties, either pro-government or in favor of the opposition parties, they comment on this issue in a biased manner. The people give their opinion if it satisfies the maximum of their own utility, subject to the earning income constraint. Some of them are worried about income tax and relief, standard deduction, entrepreneurs concerned about their tax and GSTs, GSTs, common household. They are looking forward about the commodity prices, whether it will be easier or it will be costly. Farmers, small entrepreneurs, even unemployed youth, they are also looking forward whether it will be favorable or not, or whether it will be provide any scope in future to absorb them in the economic growth process. All of us wait for it, and after that, we sacrifice or adjust in order to get maximum possible attainable utility subject to our budget constraint. It is difficult for the finance minister to satisfy all sections of the society in an equal manner. The government has a vision to progress the country in achieving towards the sustainable development goals. The Union Budget 2025 is actually a blueprint of the planning for the coming financial year 2025-26, which will be started from the month of April. The Finance Minister has outlined on some key areas in her budget speech, such as rural development, agriculture, urban development, emission growth, energy security, social sector reforms, infrastructure, tax reforms, human resource development, etc. Some other issues. Already in this current budget proposal, we have seen so many things. Some of the key features that I can mention. The budget allocates 2.66 lakh crore for the rural development and allocates 1.52 lakh crore for the agriculture and allied sectors. Infrastructure development, 11.11 crore allocated for the infrastructure development, including industrial parks and transportation system.
Job creation, 2 lakh crore allocated to generate job opportunities to 4.1 crore youth over the next 5 years. This is the vision. Tax reforms. This year, government and finance minister has gone through the tax reforms. Custom duties on gold and silver reduced to 6% and engine tax abolished for all classes of investors. Education and skilling. Focus on education and skilling, including announcement related to the skilling loans and interest subvention on higher educational loans. Any budget provision is proposed for its planning for the next financial year. But being an economist, we think it is a process of continuation toward achieving the progress of the nation in the long term. The basic objective for organizing the academic discussion is that how far this budget will satisfy the visionary of the nation, or we are in the right track in order to achieve our sustainable development goals in the long run. We are fortunate enough that we have received 2 eminent personalities amongst us. Prof. Ajitava Raychaudhuri. He is a well-known economist and a budget analyst who have analyzed several years through national electronic media. We are fortunate enough that he is with us for that, so definitely we are thankful to him. Dr. Agarwal, he is a reputed chartered accountant who have a better idea about the tax reforms. I hope definitely we will learn about some of the things related to the tax, what is the reforms, what it has been done. We will generally definitely we will learn from them. A brief profile of them that will be shared by Professor later before the lectures. We are all waiting to listen them whether this budget will satisfy inclusive growth or our balanced growth, so that it will satisfy all at length. On behalf of the organizing committee, I welcome once again to all the delegates, including faculties, research scholars, and students coming from the different departments attending for this budget discussion. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Shri Debashis Paul, sir, Finance Officer, Tripura University, to address the session. Good morning to all of you. Honorable Professor Dhanpat, Vice Chancellor in charge, Honorable Vice Chancellor is not in the university because of his busy schedule outside India, Professor Dhanpat, respected Registrar is joining shortly, Dr. Deepak Sharma, Honorable Professor Ajitava Raychaudhuri. I had the opportunity to work with Sir. Sir was the chairman of so many committees in Jabalpur University, and I was the convener of that committee, most of the committee. Sir, I had the opportunity to work with the Sir. And Dr. Dhanpat Agarwal is the well-known chartered accountant and IPR expert, not in the country, all over the world. Sir, head of the department, Professor Das, Professor Madam Saha, other faculty members, my colleagues, and dear scholars and students. So it is my great pleasure to be here in this Indian Budget Discussion Session 2025. I am happy the department has invited me to share my views. I have a little bit time to share my views in this regard. In India, we have a unique features of economic history. Our features, our challenges, our opportunities are totally different and different with the other countries. So our challenges and our problems we have to solve in our ways. It may not be similar to the problem solving solution to the other countries, maybe in the BRICS countries or maybe G20 countries. So each economy has its unique problem, and the solution will be done in that own way. So our challenges, mainly, there are so many challenges in our economy. The challenges are our per capita income is very low. So our purchasing power is not
as good as our expectations. Our income inequalities is another challenges. Our current account deficit is another one. Inflation, unemployment, poverty, unequal access to finance, and so and so. So our solution could be in different way. So government is trying to solve all these type of challenges in their own way because the resources are limited. We cannot solve in a short period of time. We cannot satisfy each and every citizen of the country. Our country is 140 crore population, which is the sum of Europe, America, sum of that. So many countries. So our solution is different. So in poverty, in our multidimensional poverty index, it was about 29% in 2013-14. And at the end of 2023, it is come down to about 11%, as per the Niti Aayog report. So as a result, a large number of under poverty people will come out from that poverty trap. So this budget, considering these challenges, so this budget has been placed by Honorable Finance Minister a few days before. So I am coming to the few highlights as we have a little bit less time. So in the budget, this is a unique one. To me, it is unique. This is the first time our budget estimate crossed 50 lakhs crore. More precisely, it is 50.65 lakhs crore. So first time we crossed the 50 lakhs crore budget estimate with fiscal deficit of 4.4% of GDP. So always. So, and government is trying to solve all these challenges in a time-bound manner so that we can successfully overcome this problem. So that some old scheme to poverty alleviation was there, Food Security Act, PM Garib Kalyan Anna Yojana, PM Poshan, and so many. So that's why we got the benefit of that. Huge numbers of properties out of this. Citizens are out of the property. So in this budget also, the Ministry of Finance Ministry has tried to emphasize some reforms mechanism. Reforms in taxation, reforms in power sector, reforms in rural development, reforms in finance sector, mining, and regulatory reforms also. So as a result, we have seen the taxation reforms. HOD was telling, Sir was telling that already the direct tax bill has been placed in the parliament and it will be enacted, and accordingly from 1st April 2026, new Act 2025 will be implemented. So it is old Act. After a long period of time, the tax reforms is being done. It is in the process. In the taxation part, 12,75,000 gross income will be totally exempted from tax. Those whose income is 12,75,000 gross income is totally exempted from tax. And some of the people are thinking that only the people who has a less income will be exempted from tax. Not. The people, those who are above 12,75,000 also got the benefit from this budget. Because the slab rate, the span of each slab is increased from 3 lakhs to 4 lakh slabs. As a result, 5%, 10%, 50%, and every people, those who are income are higher, more than the 12 lakhs will also get benefited, and maximum benefit will be 1,10,000 around. So, lower income people, high income people, all income people, they got the benefit of from this budget. So now coming to the infrastructure, Sir was also telling
So infrastructure budget has been increased by 10% with a total allocation of 11.21 lakh crore. So now another, I would say, another point which is more important to our economy for employment generation, as unemployment is our another major challenge. For employment generation, this budget has emphasized on startup. 10,000 crore has been allocated for startup project. We have existing 1,59,000 startup in all over India. More emphasis has been given on the startup. 10,000 crore has been allocated. Similarly, in the MSME sector, this is the another opportunity to have a major employment for our young youth. MSME. So in MSME, the 10 crore limit without collateral security has been increased from 10 crore to the 20 crore. So MSME got the benefit of 20 crore without collateral security. So collateral security free credit facility has been given to MSME. So in that way, just I would like to share one point. So in this budget, emphasis has also been given some 2 or 3 special schemes. So far my information, there are so many schemes. I would highlight 2 or 3 schemes here. One is PM Dhanpat Krishi Yojana. 100 districts have been identified for a low agricultural productivity. So they have been allocation has been made to improve low productivity district to some extent high agricultural productivity districts. Auto tincturing labs, ATL, another proposal in this scheme. See, next 5 years, 50,000 schools will be identified for lab purpose. Each government school should 50,000 school has a lab in the school level, so that the young star they would be a knowledge of inculcating the knowledge of scientific and innovation knowledge. So 50,000 government school will be benefited in the next 5 years. So my knowledge, this budget is unique one, and starting from the agriculture to the rural development to infrastructure, education, and so. Each areas has been given emphasis, but at the end, I would like to inform you that such a huge population, one cannot satisfy all the citizens equally. But with this budget, I think we will go forward one step ahead. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request our chief guest, Professor Agarwal sir, Honorable Vice Chancellor in charge, Tripura University, to address the session. Good morning, everybody. The dean is present on the dais. Professor Ajitava, Raychaudhuri, with the former head Department of Economics, Dhanpat University, Kolkata, and now Emeritus Professor of Economics at University, Kolkata. Dr. Dhanpat from Agarwal studied. Dr. Agarwal is a pure Bengali man. Born in Siliguri, West Bengal. Now I don't know. Dr. Agarwal is the director, Institute of International Trade, Kolkata, and he is a chartered accountant. Sri Devashish Pal, our financial chef. Dr. Deepak Sharma is not here in the register. Professor Subramanian Das, Head Department of Economics. Professor Paramita Saha, Department of Economics.
other faculty members of this university, officials, Dr. the librarian, or research scholars and students. Today's program is a single agenda, that is discussion Indian budget 2025. So, have you any idea about the budget? Or maybe all are economic students? Have you any idea? Okay. Suppose you have earned 30,000 rupees per month, so you have to prepare a scheme. Suppose you stay in a rented house, 5,000 rupees. For foods and others, 10,000 rupees. For transport, 3,000 rupees. So there is a category of expenditure, and your income is 30,000. So there is a balance, income and expenditure, and if it exceeds, then that is called deficit. So Government of India, previously when we are the student, and here also there are two types of budgets. One is Dhanpat budget and the railway budget. Now both are merged. एक साथ कर दिया सब. So one of the important aspects in this budget I have seen that बहुत दिन सोच रहा था भाई कोई तो इंडस्ट्री नहीं होता है. Suppose at that time there are steel factory, other factory will set up by Government of India, and in this budget there is a factory will set up by Government of India in Assam, that is urea factory. Urea. We use the urea in agriculture. White color, rounded, but urea is mainly nitrogen. It is costly. Okay, that is another thing. And another thing is that we are the common people. And हम लोग बजट में ताकत देखता हो क्यों भाई मेरा टैक्स कितना बेनिफिट होगा. So in this budget, every service person tax benefit is up to 12 lakhs income free. That means about 1 lakh rupees he or she will gain per annum. And it is estimated that about 3.99 lakhs crore rupees will be given in the public pocket. इतना रुपया रह दिया सबको, जिस तुम्हारा पास आ गया भाई 1 लाख रुपया पर एक्स्ट्रा रुपीस 1 लाख रुपया, तो क्या करेंगे? कोई तो बाड़ी बनाएंगे, कोई कार खरीदेंगे, कोई एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, और कुछ हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे. सो economy will grow up. This is the beauty of this budget. And both Professor Raychaudhuri and Dr. Agarwal will discuss later details of the budgets and the kind of common person. You will know everything about the budget and not the economist. So thank you, Superman, for calling me in this important seminar. Thank you the resource person, Professor Raychaudhuri and Dr. Agarwal, and all our faculty members for coming here, and the gathering is not so small. बहुत लोग आ गया भाई. So thank you everybody. सुनिए क्या बोलते हैं सब लोग. हाँ? Thank you, sir. Moving on to our special lecture on Union Budget 2025, which will be delivered by the guest of honor, Dr. Dhanpat Agarwal, sir, Director, Institute of
International Trade, Kolkata. May I request Professor Paramita Saha ma'am to give a brief about Dr. Dhanpat Agarwal sir before delivering his lecture. Dignitaries on the dais, my friends and students assembled here. This is an honor to introduce Dr. Dhanpat Agarwal, who is a very distinguished guest speaker today. We have two distinguished speakers coming from two very different backgrounds, one from the academia and the other professional economics. He is a chartered accountant by practice, but he holds a degree in PhD degree in economics. I've just learned that he's also a student of my teacher, Professor Ghosh. He has been engaged in active research also and published books and journals, many, as author and co-authors. Actually, his biodata, both of their biodata runs into pages. If I go on telling that will be more than the lecture that they will be, more time than the lecture they will be presenting. So I'm selecting and saying some those I find very striking. He has publication, he's an expert in IPR and has publications in national and international journals. He has attended international conferences and seminars nationally and internationally, has been committees in the national level. And what I find very curious, he has listed the places or the countries that he visited for academic and professional assignments. This is an endless list, and I find that the place which he hasn't visited yet will be lesser than the number of places he has visited in this world. With this, I will request him to take the dais. नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज त्रिपुरा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मुझे यहाँ आकर यूनियन बजट 2025-26 के ऊपर अपने विचार रखने का जो मौका आप सभी ने दिया है, उसके प्रति मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस सभा में मंच पर उपस्थित अभी तक यहाँ मौजूद थे, किंतु किसी कारणवश उनको जरूरी जाना पड़ा, ऐसे बहुत ही सहृदय प्रोफेसर बादल कुमार दत्ता, वाइस चांसलर इंचार्ज, मेरे साथ सहयोगी आज के इस संगोष्ठी में वक्ता हाईली लर्नेड पर्सन प्रोफेसर अजिताभ रायचौधरी, प्रोफेसर सुब्रवरण दास, श्री देवाशीष पाल और मेरी छोटी बहन प्रोफेसर परिमिता साहा, यहाँ उपस्थित बहुत सारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मैं अपने वक्तव्य में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला जुला करके अपनी बात को रखूंगा। सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूँगा कि माननीय अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का
यह लगातार 7वां बजट भारतीय संसद में रखा गया। सरकार का जो लेखा जोखा होता है उसको साल में एक बार देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वह संसद के मार्फत हमारी जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे सरकार की जो एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। भाई देवाशीष ने बताया कि इस बार के बजट में टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 50 लाख करोड़ से ज़्यादा है। और 50 लाख करोड़ को जब हम हमारे टोटल जीडीपी के कंटेक्स्ट में अगर लेंगे तो हमारी जीडीपी जो है वह आज के दिन लगभग 3.5 लाख करोड़ की है। तो उस दृष्टि से इस बजट के अंदर में 350 लाख करोड़ की जीडीपी में 50 लाख करोड़ यानी 1/7 ऑफ आवर जीडीपी। किंतु हमारे बजट का अधिकांश हिस्सा जो है वह सरकार के राजस्व में और पुराने जो लोन लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट में ही खर्चा हो जाता है। 12 लाख से ज्यादा करोड़ तो 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा लगभग 13 लाख करोड़ रुपया जो है वह सिर्फ पुराने जो सरकार के जो लोन लिए हुए हैं उनके ब्याज में ही चुकाना पड़ता है। और जैसा देवाशीष जी ने बताया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिससे हम फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, रोड बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसके ऊपर में सरकार पिछले कई वर्षों से स्टेप्स ले रही है। और यह खर्च जो है बजट में 11 लाख करोड़ से कुछ ज़्यादा है। अब हमें देखना है कि भारत की आज की स्थिति क्या है और इस बजट में ऐसे क्या प्रावधान किए गए हैं ताकि हमारी आर्थिक नीतियों के जो मुख्य बिंदु होते हैं कि आर्थिक नीतियां क्यों ग्रहण की जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है। मौलिक रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। गरीबी को घटाना, ग्रामोन्नयन के लिए काम करना ताकि गरीब लोगों के लिए बजट में ऐसे कुछ प्रावधान किए जाते हैं ताकि हमारे देश की गरीबी घटे। दूसरा जो बजट का जो ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को कैसे कम करें और रोजगार को कैसे बढ़ाएं। तीसरा उद्देश्य होता है कि जो देश में महंगाई होती है उस महंगाई को कैसे नियंत्रण में रखा। तो ये जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, इन तीनों उद्देश्य की पूर्ति का जो आधार है वह होता है कि आप देश के जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उन आर्थिक संसाधनों के द्वारा देश में आर्थिक प्रगति किस प्रकार आप करते हैं। देश में आर्थिक प्रगति अगर होती है तो फिर आप देश की बहुत सारी समस्याओं के बारे में विचार कर सकते हैं। पिछले वर्ष हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति हुई उसकी दर 6.4%। पिछले वर्ष का अर्थात 2024-25 में जो हमने जो प्रगति की है वह 6.4% की रफ्तार से। इससे पिछले साल अर्थात 2023-24 जो आर्थिक प्रगति हुई वह 8.2% की हुई। यानी 8.2% की तुलना में इस बार की जो आर्थिक प्रगति हुई है वह कुछ घटी।
8.2 से हम 6.4 पर आ गए। और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने पार्लियामेंट में बजट रखने के एक दिन पहले जो रखा 31 जनवरी को, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारी दुनिया में अभी जो एक वातावरण छाया हुआ है, उसकी वजह से आने वाले 2-3 वर्षों में भी जो है जो ग्रोथ रेट होगी वह 6.3% से 6.8% के आसपास ही रहेगी। तो ऐसे के अंदर में जो एक दृष्टि सामने आती है कि 8.2 से 6.4 और आगे भी 2-3 सालों में ग्रोथ रेट जो है वह बहुत बढ़ेगी नहीं, बल्कि जहाँ है या तो वही रहेगी या तो इसकी घट भी सकती। तो इसके पीछे जो कारण समझ में आया और जो कारण इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि अभी जो इकोनॉमिक स्लोडाउन बाय एंड लार्ज दुनिया में जो चल रहा है, और उसकी वजह से सारी दुनिया की जो आर्थिक प्रगति आने वाले साल में जो उन्होंने प्रोजेक्ट की है वह 3.2%। तो एक तरफ तो सारी दुनिया की जो आर्थिक प्रगति होनी है उसका IMF का, वर्ल्ड बैंक का जो एक एस्टिमेट है वह 3.2% का है, और वहाँ भारत की जो आर्थिक प्रगति अभी जो हुई है वो 6.4%। यानी एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि सारी दुनिया के अंदर में जो आर्थिक प्रगति हुई है उससे डबल से ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति हुई है। और उस दृष्टि से दुनिया के और बाकी देशों में जो प्रगति हुई है, वो चाहे चाइना हो, चाहे US हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे एशिया के अन्य देश हो, उन सब की भी आर्थिक प्रगति की दर पर देखा जाएगा तो इस पिछले साल जो है वह आर्थिक प्रगति 6.0 के नीचे ही रही है। 6.4 हमारी जो है उससे नीचे, अर्थात इन वन वर्ड जैसे इंडिया टुडे इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड। जब हम आर्थिक प्रगति के बारे में स्पष्ट संकेत पा लेते हैं कि आर्थिक प्रगति आने वाले दिनों में घटनी है, तो इसके कारण के बारे में भी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया कि 3 तरह के विशेष कारण जो हैं अभी दुनिया में जो आर्थिक प्रगति की जो स्लो डाउन चल रही है उसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटीज, यानी दुनिया के बहुत सारे देशों में जो जियोपॉलिटिकल जो बदलाव, आर्थिक भौगोलिक जो बदलाव आ रहे हैं, उन सब के कारण से जैसा हमने देखा कि आज से 3 वर्ष पहले लगभग रशिया यूक्रेन वार हुई, उसके पहले कोविड के कारण से बहुत सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर में दिक्कतें आई, और अभी जो वर्तमान में एक ट्रम्पोनॉमिक्स के ऊपर में बातचीत चल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो 20 जनवरी से शासन पर आए हैं, तो उनके द्वारा भी ट्रेड पॉलिसीज के अंदर में भी काफ़ी अनसर्टेनिटी आई है। तो ये जियोपॉलिटिकल जो रिस्क बनी है, जो ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज आई हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जो अनसर्टेनिटीज आई हैं, तो वह जो है एक चिंता का विषय है। और उसमें से ये निकल करके आता है कि भारत के अंदर में हमें हमारे सारे रिसोर्सेज के आधार पर अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने आर्थिक रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज कैसे करें। पहले नंबर में जब और थोड़ी डिटेल में जाऊँ उसके पहले 2-3 बातें बजट के संबंध में और बताना चाहता हूँ कि बजट के अंदर में गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को जो हम देखते हैं तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैसे हो रहा है और सरकार उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में हुई है, इसके जो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। तो वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इज की आपकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ में स्टेबिलिटी है और ग्रोथ चल रही है। हालांकि ग्रोथ रेट बढ़ी है तो फिर भी जो है वर्ल्ड के सारे सिचुएशन को देख रहे ग्रोथ में अपनी स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखने के लिए बाकी जो 3-4 जो पैरामीटर्स हैं, जो यार्डस्टिक्स हैं, उनमें पहला आता है कि सरकार में जो फिस्कल डेफिसिट, आर्थिक घाटी जिसको बोलते हैं, वह आर्थिक जो घाटा है, यानी सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के आने के बाद में
गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है तो एक्सपेंडिचर जनरली थोड़े ज़्यादा होते हैं और आय के जो स्रोत हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो उसको सरकार पूरा करने के लिए बोरोइंग करती है। तो वो बोरोइंग जो होती है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये फिस्कल डेफिसिट जो है यह सरकार ने पिछले वर्ष 4.9% की एस्टिमेट करी थी, जो कि 4.8% सरकार ने उसको मैनेज किया और अगली वर्ष जो है उसको और ज़्यादा और थोड़ा सा घटा करके उसको 4.4% तक मैनेज किया जा रहा है। यानी 2023-24 के अंदर में जब हम कोविड के संकट से जब निकल रहे थे तो सरकार की बोरोइंग्स ज़्यादा हो रही थी और सरकार खर्च कर रही थी। तो इसलिए 2023-24 में यह आर्थिक जो घाटा था वह 5.6% का था, जो कि 24-25 में सरकार ने उसको प्रोजेक्ट किया था 4.9% और वो हुआ 4.8%, और अगली साल जो है सरकार इसको 4.4% पर रखने की कोशिश करेगी। और इस साल के अनुभव से जब 4.9 का इंटरव्यू 4.8% किया था, तो इसका लगता है कि 4.4% सरकार उसको मैनेज कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो समझ में आ रही है कि सरकार ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरो कर रही है मेनली, और जो टोटल बोरोइंग है वह 15,68,936 करोड़ है, 15,68,000। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है सरकार का वह भी लगभग इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहते हैं कि एक तो डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दूसरा राज्य सरकारों को जो सरकार केंद्र सरकार को मदद कर रही है, तो इफेक्टिवली वह 11,21,090 करोड़ को जो है केंद्र सरकार डायरेक्ट कर रही है कैपिटल, और राज्य सरकारों को जो मदद कर रही है वह है 4,27,192 करोड़। कुल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह 15,48,282 करोड़, यानी जितना हम बोरो कर रहे हैं 15,68,000 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 15,38,000 करोड़। यानी सरकार की बोरोइंग पहले के समय वो बोरोइंग होती थी वो रेवेन्यू में खर्च होती, अभी किंतु बोरोइंग होकर के वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जो है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको रेवेन्यू अर्निंग से मेट करते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जीएसटी जो लाया गया, जीएसटी का कलेक्शन जो है वो अच्छा हो, यानी सरकार ने जितने भी अलग अलग कानून बनाया और सरकार जो टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उससे टैक्स के कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, और टैक्स के कंप्लायंसेस बढ़ने से सरकार के पास में जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लगभग मिट कर रही है। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आनी चाहिए सरकार के पास में फिस्कल बजट मैनेजमेंट जो लायबिलिटी है, जो एक्ट है उसका बना हुआ, उसके हिसाब से सरकार को अभी तक जीरो डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जीरो पर पहुंच जाना चाहिए था, जो अभी तक जीरो पर तो नहीं पहुंची है, किंतु इफेक्टिवली सरकार की जो प्राइमरी जो डेफिसिट है उसको 0.8% तक सरकार ला चुकी है। तो यह है इसका पहला पैरामीटर, मैनेजिंग दी फंड्स एंड thereby having the very minimum amount of revenue deficit and a controllable fiscal deficit. This is one parameter. नंबर 2 पैरामीटर जो है जो मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहां पर भी सरकार ने पिछले दिनों जितनी भी स्कीम्स दी है, जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रही है और गाँव के विकास के लिए जो काम कर रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बहुत सारे जो एलोकेशन सरकार को करती है, और उसके कारण से सरकार के प्रोसेस में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है उससे जो नतीजा सामने आया है वो ये बताता है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सरकार ने बनाई जिसको कहते हैं एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, अभी 2023 में। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट जो सरकार की है, इस रिपोर्ट का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी, 15 साल से ऊपर के जो वर्किंग पॉपुलेशन जो लोग आते हैं, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हमारी थी 6%।
जो कि घट करके 2023-24 में इट हैज कम डाउन टू 3.2%। तो मैंने ये बताया कि भाई आप जो बजट पेश करते हैं और जो इकोनॉमी को मैनेज करते हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी अल्टीमेटली वेदर इट हेल्प्स इन मैनेजिंग दी इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रॉपर्ली एंड टू प्रोवाइड एंड टू क्रिएट जॉब्स। ऐसे तो जो इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया है कि हमारे यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन, हमारे यहाँ जो यूथ है, क्योंकि 65% of the people in the country are below 35। हमारे जो यूथ हैं 14 से 29 साल के जो यूथ हैं, उनकी संख्या भी हमारे देश में 37 करोड़ के आसपास। और दुनिया के अंदर में हमारा जो यूथ पावर है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग यूथ पावर है। और इस यूथ पावर के लिए सरकार जो भी स्कीम्स दे रही है, उसके अंदर में आज के दिन जो यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे जो रिसर्च कर रहे होते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर्स की व्यवस्था की गई है, स्टार्टअप्स को इंकरेज करने की व्यवस्था की गई है। एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर में भी जो है बहुत सारा वैल्यू एडिशन करके हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश। ये तमाम सारे जो सरकार के जो एफर्ट्स हैं, उन सबको मिला करके आज ये देखा जा रहा है कि इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कर्म संस्थान जिसको बोलते हैं, वो हमारे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ रही है, यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ वो जो स्टार्टअप्स और ये जो यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ इनोवेशन बढ़ रहा है। इस इनोवेशन को और कितना बढ़ाना आवश्यक है, इस पर अभी सेकंड पार्ट में। किंतु कुल मिलाकर के ये जो फिस्कल डेफिसिट और अनएम्प्लॉयमेंट दो में सरकार खरीद कर रही है। तीसरी बात आती है पॉवर्टी। क्या सरकार देश में पॉवर्टी घटाने में सक्सेस हुई है? तो इसके बारे में हमारे देश के नहीं, विश्व के कई प्रतिष्ठानों के जो आंकड़े बताते हैं और जिसको हमारे प्रधानमंत्री बार बार इसका उल्लेख करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जो एफर्ट्स दिए हैं, उससे पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन जो थे, बीपीएल लेवल के नीचे जो लोग थे, वो बीपीएल लेवल से ऊपर आए हैं और इनकी संख्या 25 करोड़ के आसपास बढ़ा। तो हमारे देश में एक समय पॉवर्टी लगभग 25% के आसपास हुआ करती थी। उसको फिर यूनाइटेड नेशंस ने भी जो है मिलेनियम पॉवर्टी रिडक्शन का जो प्रोग्राम दिया था, उसमें प्राय दुनिया में हर जगह ही पॉवर्टी घटी है। तो हमारे यहाँ जो है वह पॉवर्टी आज के दिन जो है लगभग 10% के आसपास अभी बिलो बीपीएल लेवल के नीचे लोग हैं। किंतु हमारा लक्ष्य अभी और आगे है और उसके लिए विकसित भारत की जो परिकल्पना सरकार कर रही है कि बाई 2047 हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। और विकसित राष्ट्र का मतलब होता है जीरो पॉवर्टी। तो एक दिन में काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है और हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज और हम जिस तरह से इनोवेटिव वे में आगे बढ़ेंगे, तो आज हम डेवलपिंग कंट्री हैं और आने वाले बेला में हम जो एफर्ट्स देंगे तो हम 2047 तक जो विकसित राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक समृद्धशाली वैभवशाली राष्ट्र का जो निर्माण कर सकेंगे। उसके बाद जो है पॉवर्टी जो एक थर्ड पैरामीटर में बताया, दैट शुड बिकम जीरो। ये मैंने तीसरा पैरामीटर बताया। चौथा एक पैरामीटर आज के दिन बहुत जरूरी है, वह है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक वैषम्य, आर्थिक विषमता। ग्रोथ तो हो रही है, पर कैपिटल के अंदर में भी हम देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है, कुछ लोग पॉवर्टी से ऊपर भी आए हैं। किंतु एंड आप ये जो देखा जा रहा है कि रिच आर बिकमिंग रिचर एंड सम सेक्शन ऑफ द पीपल दे आर बिकमिंग पोरर, या उनकी इनकम जो है कॉन्स्टेंट हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिन हमारे देश में भी है, पूरे विश्व में भी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। उसको भी कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए भी सरकार सचेष्ट है। जैसे जैसे लोग पॉवर्टी से ऊपर की तरफ आएंगे और सरकार इसके लिए जो वेलफेयर मेजर्स ले रही है, जिससे कि सरकार ये देख रही है कि जो हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है, हमारा जो लोअर क्लास है, उसके जो खर्चे जो है अधिकांश फूड
और बेसिक नेसेसिटीज में खर्च हो जाते हैं। इसलिए सरकार उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के आधार पर बहुत सारी फैसिलिटी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत सारे इस तरह का प्रावधान कर रही है, ताकि उनकी जो इनकम है उस इनकम को वो और अच्छे कामों में लगाएं और उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको सरकार वो जो 80 करोड़ लोगों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन करके उनको मुफ्त में भोजन दे करके, उनके लिए मुफ्त में आवास की व्यवस्था करके, उनके लिए जल जीवन प्रोजेक्ट के अंदर में उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी की व्यवस्था करें, इत्यादि करके सरकार कोशिश कर रही है कि देश के अंदर में जो आर्थिक विषमता है उस विषमता को कैसे कम किया जा सके। अभी वर्तमान में जो समस्या एक और जो सबको घेरे हुए है वह है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस आएगी उसको मैं बाद में थोड़ा टच करूंगा। और एक जो बहुत बड़ी एक अहम समस्या जो बनी हुई है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में भी सरकार सचेत कर कैसे। यह जो मेरा जो स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट था जो बजट के ऊपर में, अब मैं जरा इकोनॉमिक पॉलिसी और हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर मैं आपको जरा बताना चाहूँगा। आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए हाउ डज दिस बजट इज कंसर्न एंड हाउ आई कैन लिंक इट विद वी द ह्यूमन बीइंग। अब देखिए कि जब कभी हम कोई आर्थिक प्रगति की बात करते हैं या हमारा कोई लक्ष्य रखते हैं, तो उस लक्ष्य के लिए जैसा कि एक लक्ष्य है कि भारत एक 2047 और 2047 में भारत जो है विकसित राष्ट्र बने। तो विकसित राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य है ये हमारा साध्य है, हमारा टारगेट। इसको प्राप्त करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास में रिसोर्सेज क्या है, आर्थिक संसाधन क्या है। So there are 3 types of economic resources. One is the natural resource, the second is the capital resource, and the third is the human resource. तो इन तीनों रिसोर्सेज के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि इस रिसोर्सेज के बारे में आज के दिन क्या रेलेवेंस है और हम रिसोर्सेज में अपने आप को कहाँ पाते हैं और हमारे अंदर में ऐसी कोई कमी है क्या जिसको हम पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आर्थिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी देना चाहता हूँ। 1757 में ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए। ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक जिस डेवलप्ड कंट्री की बात हम कर रहे हैं 2047 में, यानी आज से 300 साल पहले हम एक डेवलप्ड नेशन थे। आज दुनिया में हम जो जीडीपी में, दुनिया की जीडीपी में जो शेयर रख रहे हैं वो 3.5% है, किंतु 1757 ये जो एक प्रोफेसर मेडिसन और एक और लेखिका है इंडिया की एकता पटनायक, उन्होंने जो इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करके बताया कि 1757 में हम जो है दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा हो गया। उस समय यूके, यूरोप के जो देश हैं उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही नगण्य थी, किंतु 1757 में वो जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए और उसके आने के बाद में जिस तरह से उन्होंने हमारे रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन किया और जिस तरह से हमारे यहाँ की इनकम को पुल आउट करके वो अपने देशों में ले जाने लगे, तो इसका भी एक अनुमान आया है कि 1765 से लेकर के 1938 तक हमारे देश से आज के मूल्य में 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर धन हमारे देश से लूटा गया। और हमारे देश की आर्थिक मजबूती को, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह देश जो है आज के दिन अगर देखें तो एक परावलंबी राष्ट्र बना हुआ है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, किंतु
1947 में ग्लोबल जीडीपी में हमारा शेयर 1757 के 25% से घट करके लगभग 2.5% ही रहे और वहां से 75 वर्षों के बाद भी आज के दिन ग्लोबल जीडीपी में हमारा शेयर जो है मात्र 3.5%। एक बात आपको और बता रहा कि 1757 या उससे पहले यानी 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के पहले दुनिया के सभी देशों में ये जो 3 इकोनॉमिक रिसोर्सेज बताया उसमें प्राकृतिक संसाधन ही सबसे बड़ा संसाधन हुआ करता है। ज्यादातर हम लोग जो है कृषि एवं पशुपालन के आधार पर अपनी जीविका निभाते थे। इसके अलावा भारत के अंदर में बहुत सारे कला कौशल के आधार पर ऐसे बहुत सारे एविडेंस है कि हम सिर्फ कृषि में और पशुपालन में ही नहीं थे, इसके अलावा भी जो है हम उद्योगों के अंदर में भी तरह तरह के हमारे यहाँ इनोवेशन हुए। ऐसे तो वैदिक अगर एविडेंस दिया जाए तो हमारे यहाँ सुश्रुत ऋषि हुए जिन्होंने सर्जरी के ऊपर में बहुत बड़ा रिसर्च किया। हमारे यहाँ ऋषि कनाद हुए जिन्होंने आज के दिन जो एटॉमिक एनर्जी कहते हैं तो उस कणों के ऊपर में उन्होंने न्यूक्लियर के ऊपर में बहुत सारे रिसर्च किए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर में आप मॉडर्न साइंस काम कर रही है। किंतु ब्रॉडली 1757 कहें या हम 19th सेंचुरी के पहले कहें, the whole world was depending mainly on the natural resource. Natural resource used to contribute almost 90% of the economic resources within those days. कैपिटल रिसोर्स के ऊपर में तो कोई बात नहीं थी और ह्यूमन रिसोर्स को तो उस तरह से एक लेबर के रूप में ही जनरली माना जाता था कि वो श्रमिक था और उस रूप से करेगा। किंतु जो सबसे बड़ी जो 2-3 बातें थी उस समय जो औद्योगिक क्रांति के पहले जो 2-3 बातें थी उसमें पहला तो ये था कि भारत एक स्वावलंबी राष्ट्र था। जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत उस समय आत्मनिर्भर स्वावलंबी राष्ट्र था। दूसरे नंबर, भारत के अंदर में उस समय कोई आर्थिक विषमता नहीं थी, भारत के अंदर में कोई गरीबी नहीं थी, भारत के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं थी। जिन 4-5 समस्याओं को मैंने अभी जिक्र किया वो सारी समस्याएं जो है औद्योगिक क्रांति के बाद में आई। औद्योगिक क्रांति के पहले जब भारत दुनिया की इनकम का 25% हिस्सा रखता था उस समय भारत स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और एक वैभवशाली राष्ट्र था और उसके साथ ही यहाँ पर आर्थिक विषमता नहीं थी। गांव और शहर के अंदर में भी कोई रीजनल इम्बैलेंसेस नहीं हुआ करते थे, लोग सभी के पास कोई न कोई रोजगार होता था और जो व्यवस्था थी उसके अंदर में देश एक खुशहाली से और बिना किसी अनसर्टेनिटी के, बिना किसी टेंशन के यहाँ के लोग ने जीविका चलाया। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या 2-3 बातें को बता। औद्योगिक क्रांति के बाद 2-3 परिवर्तन हुए। एक तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस की जो किताब लिखी और उसमें उन्होंने जो इकोनॉमिक्स के जो प्रायोरिटी के बारे में बताया, कंपटीशन और जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इत्यादि, उससे लोगों के अंदर एक होड़ लगी और उन्होंने मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट को और किसी भी तरह से उसको अपने कब्जे में करें तो ऐसा एक चित्र सामने आया जिसके कारण से दुनिया में पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद का जन्म 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति का बाद का शब्द है, उसके पहले पूंजीवाद कोई शब्द नहीं था। और पूंजीवाद के कारण से जब आर्थिक विषमता बढ़ने लगी तो उसी से मार्क्सवाद का जन्म हुआ। यानी पूंजीवाद और मार्क्सवाद जो है दोनों का जन्म जो है औद्योगिक क्रांति के बाद। किंतु औद्योगिक क्रांति के जो एडवांटेजेस थे उसके अंदर में पहले जो सुविधाएं मनुष्य को हुआ करती थी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कई चरण हम देखते हैं। पहला चरण है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 जिसके अंदर में ट्रांसपोर्ट स्टीम इंजन का आविष्कार। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 जो हुआ उसमें इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 जो हुआ वो 20th सेंचुरी के अंदर में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हुआ और अभी जो i4 की बात कर रहे हैं उसके अंदर में हम और फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और बहुत सारी स्पेस टेक्नोलॉजी इत्यादि हम बातें कर रहे हैं। तो यह जो 19th सेंचुरी का जो रिवॉल्यूशन था उसमें जिस पूंजीवाद का जन्म था इसमें कैपिटल रिसोर्स बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म के कारण से रीजनल इम्बैलेंसेस बने और भारत जैसे बहुत सारे जो निवेश अंग्रेजों ने और बाकी यूरोपीय देशों में अपने कब्जे में लिए, वहाँ पर गरीबी आ गई और वो लोग जो है धनी हो गए, यानी रिच एंड पुअर कंट्री हो गए और हम लोगों को
थर्ड वर्ल्ड के नाम से भी कहा जाता है। अब समय ने दोबारा करवट ली, 21st सेंचुरी में हम आ गए और आज के दिन जो औद्योगिक क्रांति है वह आज के दिन जो है इट इज बेस्ड ऑन दी नॉलेज। सो वी आर इन द एरा ऑफ नॉलेज, इन्वेंशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर में पूरी इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए फिर परिवर्तन कैसे होगा। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जो प्रायोरिटी है 19th सेंचुरी के पहले नेचुरल रिसोर्सेज, 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी के पहले तक जो है जो प्रायोरिटी थी वो कैपिटल रिसोर्स की प्रायोरिटी थी। टुडे देयर इज अ शिफ्ट और नहीं नेचुरल रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट रहा, नहीं कैपिटल रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट रहा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स टुडे इज व्हाट? द ह्यूमन रिसोर्स। विश्व बैंक ने अभी एक स्टडी, हालांकि कई साल हो गए, हमारे मेरे मित्र जानते हैं इस विषय में, तो विश्व बैंक ने जो स्टडी करी उसने इन तीनों रिसोर्सेज के एक इक्वेशन को लिया और उसके अंदर में जो पब्लिश उनके जो रेशियो के ऊपर में जो अध्ययन है वो ये बताता है कि टुडे ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट 64% ऑफ द टोटल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्स कंट्रीब्यूट ओनली 16% ऑफ द टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स कंट्रीब्यूट ओनली 20%। अर्थात अगर आपके मन में अगर कोई ऐसी एक ग्लानि हो कि जिसके वॉलेट में पैसा ज्यादा है वो ज्यादा धनी है, किंतु आप सभी विद्यार्थी, हम सभी रिसर्च स्कॉलर्स जो भी आज के दिन ज्ञान विज्ञान की दुनिया में हैं, अगर हमारे पास में ब्रेन है, अगर हमारे पास इंटेलेक्ट है, तो यू आर 4 times more richer than the person who has got only money in his wallet। यानी ये जो 64% और 16% का ये जो है 4 times हो गया ना, 16 चौके 64। तो इस बात को जरा हमको समझना है कि हु इज रिच, अ कंट्री विथ लार्जर ह्यूमन रिसोर्स और ए कंट्री विथ मोर कैपिटल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को तो हम जानते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर में आज ऑयल है वगैरह वगैरह, किंतु उनका रिसोर्स जो है 20% तक ही। अब ये जो आपको यहाँ पर जो हम लोग पहुंचे हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पैरामीटर्स के बारे में कहाँ क्या है, अब इसका एक इम्प्लीकेशन आपको बताना है और इसके लॉजिक्स को हमको समझना है। टुडे इफ वी फील दैट ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, देन which country has a larger human resource, India or US or Europe? दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ के आसपास है, हमारी पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है, चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास है, इत्यादि कम बेसी। इसमें क्या इक्वेशन है? तो इसमें इक्वेशन ये कहता है कि अवर पॉपुलेशन इज 18.5%, China's population is 18%, US population is 5%। बाकी मैं जापान जर्मनी की बात नहीं करता। जब हम कहते हैं कि भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो यूएस को कहते हैं कि ये लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना 2nd लार्जेस्ट, जापान 3rd लार्जेस्ट, जर्मनी 4th लार्जेस्ट, इंडिया 5th लार्जेस्ट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया की इनकम है 105 ट्रिलियन डॉलर। लेटेस्ट जो डाटा आया है वर्ल्ड बैंक के जो कंसेंसस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, देन फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक 105 ट्रिलियन डॉलर एज द एक्यूरेट फिगर। 105 ट्रिलियन डॉलर के अंदर में यूएस की जीडीपी कितनी है? 28.5 ट्रिलियन। 28.5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब, अभी जरा उत्तर में जाओ, 2 मिनट सुन जाओ, 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट। 28.5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब आउट ऑफ 105 ट्रिलियन डॉलर कितना हुआ? थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएं तो नियर टू 25%, लिटिल मोर देन 25%। अमेरिका की पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का कितना है? 5%। दुनिया की इनकम का 105 ट्रिलियन डॉलर के अंदर 28.5 ट्रिलियन कितना हुआ? 25%।
5% of the global population, 25% of the global income. China, 19.5 trillion, nearly 18% of the global income. Population 140 crore, 18% of the global population, and income 19.5 trillion out of 105 trillion, which is also near to 18% of the global income. बराबर बात है। इंडिया, भारत, पॉपुलेशन कितनी? 142 करोड़, 18.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। इनकम कितनी? 3.8 ट्रिलियन डॉलर। इनकम में हमारा हिस्सा कितना? 3.5%। तो 18.5% अगर हमारी पॉपुलेशन है, यानी ह्यूमन रिसोर्स अगर हम उस दृष्टि से देखें और विश्व बैंक के जो आंकड़े बताते हैं और उसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन को जस्टिफाई करना चाहें, लॉजिक्स को, तो देन वी फाइंड द रिजल्ट एज एब्सर्ड। So there is absurdity in the result when we find that we are 18.5% of the global population and 3.5% of the global income. तो नेचुरली जो विश्व बैंक के जो एनालिसिस है और उसको हम जानते हैं कि वी आर इन द एरा ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन, तो नेचुरली इंडिया को कहाँ होना चाहिए? नंबर 1 पर होना चाहिए ना। किंतु हम लोग कहाँ हैं? 28.5 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में अगर आप 3.5 को लेंगे तो लगेगा कि वी आर 1/8 ऑफ द यूएस इकोनॉमी और 1/12। तो हमसे वो 8 गुना ज्यादा है। चाइना जो है वो भी हमसे 5 गुने से ज्यादा है। किंतु चाइना जो है उसकी पॉपुलेशन 18% है और इनकम में भी 18% है। 1980 में भारत और चाइना दोनों लगभग एक ही जगह थे। पिछले 40 सालों में चाइना ने ऐसा क्या जादू किया, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैसे उसने मैनेज किया ताकि वो अपनी इनकम को दुनिया में उसकी पॉपुलेशन का जो अनुपात है उसके बराबर ले आया। तो उसको गिफ्ट तो नहीं किया। लोग कहते हैं कि चाइना इसको कॉपी ऐसा कुछ नहीं है। उसने मेहनत करी, अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, अपने स्किल डेवलपमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को इम्प्रूव किया। उसने क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन्वेंशंस के ऊपर भी विश्वास किया और उसके ऊपर भी ईमानदारी से लग गया। और लग करके ग्रेजुअली पहले उसने 1978 में डेंग जियाओपिंग जब आए तो उसने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स किया। कम्युनिटी जो कम्यून्स होते थे उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म को उसने सुधारा। उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो अपने बड़े बड़े जो पीएससी होते थे, एसओई जिसको स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस कहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके टीवीज, टाउन एंड विलेज इंडस्ट्री को एमएसएमई कहते हैं, उसके अंदर में सुधार किया। छोटे छोटे चप्पल बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए और इस तरह की छोटी मोटी जो आम जनता के उपयोग की चीज़ें होती है उसको तो मास स्केल में उन्होंने बनाना चालू किया। उन्होंने एसीजेड बनाए, छोटे छोटे एसीजेड नहीं कि फ्यू स्क्वायर किलोमीटर या फ्यू एकर्स में हमने एसीजेड बनाए, वैसा नहीं, पूरा का पूरा एक प्रोविंस शेंजेन वगैरह बहुत सारे एसीजेड उन्होंने बनाए और एसीजेड के अंदर उन्होंने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उन्होंने अपने एथनिक चाइनीज जो उनके एंटरप्रेन्योर्स थे, जो उनके उद्यमी लोग थे, जो माओ से तुंग के ज़माने में 1949-1976 में जो देश छोड़ करके बाहर चले गए, सिंगापुर, यूएस वगैरह वगैरह दुनिया के बाहर चले गए थे कि हम बिजनेस नहीं कर सकेंगे, उनको उन्होंने डेंग जियाओपिंग ने बुलाया, उनको रेड कार्पेट वेलकम किया, कहा कि आप आओ हमारे देश में, आपके ऊपर में टैक्स के लिए और बाकी सारी सुविधा हम देंगे। और उन्होंने दिया, उन एथनिक चाइनीज लोग पहले आए और आकर के 1990s के बाद जो है उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ, क्योंकि उनके पास में नॉलेज भी था, बाहर रहते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज, उनके पास पूंजी भी थी, तो अपने साथ में वो ह्यूमन रिसोर्स भी लाए, कैपिटल रिसोर्स भी लाए और ला करके अपने देश के लिए उन्होंने काम करना चाहते। और इस तरह जो है चाइना जो है आगे बढ़ा। आज के दिन चाइना के अंदर में जिस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की बात करते हैं, सारी दुनिया के अंदर में अगर आज के दिन अगर कोई देश की उन्नति को देख सकते हैं तो दैट कैन बी ओनली थ्रू द नॉलेज पावर। पीटर ड्रकर ने कहा है ना कि नॉलेज इज पावर, कैपिटल नॉलेज इज द पावर टुडे। तो वो चाइना ने करके दिखाया और उस 40 साल के मेहनत से चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर गया है। अभी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी को लिया जाए तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।
अमेरिका में जो महंगाई है, अमेरिका में जो परचेजिंग पावर है वहाँ के डॉलर का, उसकी तुलना में भारत का और चाइना का परचेजिंग पावर तो ज़्यादा है। और उस दृष्टि से भारत की जो 3.8 ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी जो जीडीपी है वो कहीं जाकर 13 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाती है। किंतु अभी हमको उसी पैरामीटर को लेकर चलना पड़ेगा जो कि हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। चाइना की और इंडिया की जो एक्सचेंज रेट 1980 में थी 8 युआन पर डॉलर एंड 8 रुपये पर डॉलर, हम 8 के 80 हो गए, 90 की तरफ जा रहे हैं। चाइना का युआन जो है वह स्ट्रॉन्ग हो गया और वह जो आज के दिन 6.5 के आसपास है, यानी उसका वैल्यूएशन बढ़ा है, हमारा वैल्यूएशन घटा है। घटने का कारण क्या है कि हमने जो है हमारे देश के अंदर में इनोवेशन को, इन्वेंशंस को, R&D को प्रायोरिटी दी। यूएस के अंदर में और चाइना के अंदर में उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, उस जीडीपी का लगभग 3%, 2.5% से ज़्यादा कमोबेश उतना वो R&D पर खर्च करते हैं। हमारे देश में हम R&D पर, हमारी जीडीपी ही छोटी सी है 3.8 ट्रिलियन, उसका भी 0.67% खर्च करते हैं। चाइना अपनी जीडीपी का 2.8% खर्च करता है, यूएस भी लगभग 3% करता है, जापान भी लगभग 3-4% करता है, इसराइल 5% खर्च करता है। हम अगर R&D पर ये जो बजट है, बजट का इस चर्चा में इस बात को इसलिए बताना जरूरी है कि अनफॉर्चुनेटली मैं जो देख रहा था कि ये जो एलोकेशंस जो हुए हैं, उन एलोकेशंस के अंदर में व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द फिगर्स, तो मुझे ऐसा मिला कि हमारा जो बजट के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बजट है वह टोटल 50 लाख करोड़ के बजट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम सिर्फ 55,679 करोड़, 1% only we have allocated for the science and technology. तो 1% साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट का R&D को कितना होगा? तो ये जो प्रायोरिटी है, हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, मैं इसके लिए मना नहीं करता। किंतु आज अगर हमारी प्रायोरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो हम ये जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेस से हम जो ग्रो कर रहे हैं, वो चाइना जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से जो ग्रो कर रहा है, तो हमारी जो मिसमैच जो हो रही है और इसका नतीजा क्या हो रहा है। मैं स्वदेशी जागरण का अखिल भारतीय सह संयोजक के दायित्व से इस बात को बता रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि जब बाजार जाओगे स्वदेशी सामान लाओगे, तो जब हम बाजार जाते हैं तो विदेशी सामान मिलता है। आज यहाँ पर घरों में देखिए सारे एयर कंडीशन विदेशी हैं। आप घर पर जाओगे, आपका रेफ्रिजरेटर, आपकी वॉशिंग मशीन, जिस गाड़ी में जाओगे वो ऑटोमोबाइल्स, वो आपका हाथ में जो मोबाइल होगा वो उसका एक माइक्रोफोन, तमाम चीज़ें जो है हमारे देश के अंदर आज। और मैंने कैलकुलेशन किया कि हमारे पिछले कई सालों से हमारे जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है वो 250 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। कुछ हद तक हम सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करके उससे अर्न करके हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे 3% को जमाने में हुआ करती है, वो भी एक पैरामीटर था, 1.2% बतानी है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन कर रहे हैं, पर कैसे मेंटेन कर रहे हैं? हमारे जो एनआरआई जो बाहर हैं, एवरी ईयर दे आर सेंडिंग $125 बिलियन। वो एनआरआई का जो रेमिटेंस आता है उसके कारण से हमारे देश में हम जो इंपोर्ट करते हैं उसकी कमी को पूरा करते हैं। किंतु वो एनआरआई वो कितनी कड़ी मेहनत करके भेज रहे हैं, किंतु अगर हम यहाँ पर अगर हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, अगर हमारे यहाँ लोकल एमएसएमई के द्वारा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के द्वारा अगर हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ ये इम्पोर्ट होता रहेगा। और इम्पोर्ट होता रहेगा तो क्या नतीजा है? इस इम्पोर्ट की जो गैप होती है, ये गैप जो है हर साल हम कैसे पूरा करते हैं? इसको हमको बाहर से उधारी लेना पड़ता है, विदेशी पूंजी को कैपिटल अकाउंट में हमको लेना पड़ता है। और वो कैपिटल अकाउंट का पैसा 3 अकाउंट में आता है, या तो फॉरेन डेट के रूप में आएगा, या वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आएगा, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में आएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो लोगों को ऐसे बताया जाएगा, मीडिया बोलेगी कि इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर, इट इज नॉट। उसके अंदर में बबल बनते हैं, उस बबल के द्वारा उसको उठा दिया जाता है, और जो वो पैसा बाहर ले जाते हैं तो वो जो पुल आउट करते हैं फंड को लाइक पीस के रूप में, तो आपका बाजार भी गिरता है, रुपया भी कमजोर होता है, और हमारी आर्थिक संप्रभुता पर भी बहुत सारा असर इसका आता है। आज के दिन मैंने एक कैलकुलेशन किया, और वो कैलकुलेशन क्या बता रहा है कि हमारे देश के अंदर में पिछले कई सालों के इस कंटिन्यूअस ट्रेड अकाउंट डेफिसिट के आने से
हमारे देश के अंदर में आज के दिन $1 ट्रिलियन का FDI है, $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू के बराबर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और $700 बिलियन के बराबर हमारे पास फॉरेन डेट है। कितना हो गया? $2,700 बिलियन यानी $2.7 ट्रिलियन की हमारी विदेशी पूंजी की हमारे मुल्क में बर्डन है। फॉरेन रिजर्व कितना है? $630 बिलियन। $630 बिलियन को अगर 2700 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स लायबिलिटी। और ये 4 टाइम्स लायबिलिटी अगर किसी तरह से पुल आउट होने लग जाए और हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हालांकि हमारे केंद्रीय मंत्री ने गोयल जी ने कहा कि हमारे आने वाले 10 साल में हमें कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी, बट हम तो बीओपी क्राइसिस को झेले हुए हैं 1991 में 90 में, और हमको हमारा गोल्ड मॉर्गेज करना पड़ा था। तो व्हाई डोंट वी अडॉप्ट सम पॉलिसी वेयरबाय रियल सेंस में अंडरस्टैंडिंग कि सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होगा, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, स्वावलंबन का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बताएंगे, वन साइडेड व्यू को बताएंगे, वी आर द 5th लार्जेस्ट इन द एग्रीगेट, बट व्हाट अबाउट पर कैपिटा? पर कैपिटा में हम 132वें स्थान पर हैं, और वो भी जो पर कैपिटा आपकी है उसके अंदर में भी बोलते हैं कि 10% अगर टॉप को निकाल दिया जाए तो बॉटम 90% जो रहेंगे तो पर कैपिटा जो है वो आपकी वैसी हो जाएगी जो कि दुनिया के सबसे गरीब देशों की जो पर कैपिटा है उसके बराबर भी आप नहीं रहेंगे। यानी जो सच्चाई है उस पर हम पर्दा डाल करके नहीं चल सकते। 2047 का हमारा लक्ष्य तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आज के दिन व्हाट इज मोर रेवेन्यू। मैं एक फिगर आपको और देता हूँ, ज़्यादा आपको बोधर नहीं करूँगा, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं अमेरिका की बात करता हूँ कि अमेरिका की $28.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मेरे पास में डाटा है बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के, और वो बताते हैं कि $7.7 ट्रिलियन दे अर्न only from the royalty of the patent and trademark and industrial design and copyright। वो उनका $7.7 ट्रिलियन की अर्निंग होती है ओनली फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट्स, और 7.7 ट्रिलियन में जो बोल रहा हूँ तो ये फिगर जो आपकी टोटल 140 करोड़ लोगों की जो आय है उसकी डबल से ज्यादा है। हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स है, हम उनको R&D के लिए जगह नहीं दे पा रहे। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है ब्रेन हो रहा है, वही हमारे जो इन्वेंटर्स, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वहाँ जाके गूगल में, एप्पल में और वो सारी जगह काम करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल हमारे जो हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन्वेंशंस जो है, पैटेंट के अंदर नाम उनका मिलेगा एक इन्वेंटर, जो पैटेंट की जो राइट है वो गूगल की होगी, एप्पल की होगी, फेसबुक की होगी, ट्विटर की होगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बात समझ में आ रही है? अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपकी नहीं है, IPR अगर आपकी नहीं है, तो उसका अधिकार, उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वह किसका हो रहा है? वह यूएस का हो रहा है, बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज का हो रहा है, आपका नहीं। बातें बहुत हैं, एक सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अभी हमें यह देखना है कि देश का विकास एक स्टेबल विकास कैसे हो। उसके लिए विकास करने के लिए, स्टेबल ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी चाहिए। अभी हम लोग पिछले कुछ सालों से कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी में जा रहे हैं। सरकार अभी टैक्स भी घटा रही है मिडिल इनकम के लिए। तो अभी हमारे वाइस चांसलर साहब भी बता रहे थे, वो भी हमारे विद्वानों ने यहाँ जिक्र किया कि वो जो डिस्पोजेबल इनकम जो है हमारे मिडिल क्लास का बढ़ेगी, तो क्या करेंगे? वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कंजम्पशन खरीदेंगे, तो उनकी चॉइस है। किंतु मुझे जो फिगर्स मिले टाटा के हिसाब से, उसमें हमारी जो हाउस होल्ड सेविंग्स जो है, जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स जो है, वो पिछले 10 साल से गिरती जा रही है। यानी हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप को हम मीट आउट करने के लिए डोमेस्टिक सेविंग्स के आधार पर हम ग्रोथ लेते थे, तो हमारा जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वह 4 के फैक्टर्स के हिसाब से बताता है कि इफ यू वांट टू ग्रो एट 8%, तो 8 into 4 मीन यू हैव सेविंग्स और कैपिटल ऑफ 32%, 8 into 4। अगर हमारी हाउस होल्ड सेविंग गिरेगी, डोमेस्टिक सेविंग गिरेगी, तो उस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप को पूरा करने के लिए भी नीड फॉरेन कैपिटल, और फॉरेन कैपिटल के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली
आपके ऊपर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बर्डन जो है, जो मैंने बताया जो 4 टाइम्स हो गया, तो वी आर ग्रोइंग नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए भी नहीं आ रहा है कि इन्फ्लेशन होने के कारण से, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के कारण से। अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कई बार कहा है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कई बार कहा है, देश में अभी जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। जो ग्रोथ हो रही है आपका कैपेक्स गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है, या फिर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा हो रही है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें जो है ये सब फंडामेंटल्स है। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैंने इन इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स को आपको बताया कि यू शुड नो। बजट के बारे में हम एक तरफा खाली व्हाट्सएप से और ऊपरा ऊपरी न्यूज से पढ़ करके अगर हम सोचें कि बजट बहुत अच्छा है, बहुत विकास उन्मुख है, बहुत गरीबोन्मुख है, बहुत रोजगारोन्मुख है, तो इसके अंदर थोड़ा सा जब जाएंगे, जब मंथन करेंगे, तब आपको रियलिटी का पता चलेगा कि हमें ये सरकार जरूर कुछ अच्छा ही कर रही हो, ध्येय अच्छे हैं, निष्ठा अच्छी है, किंतु देश के अंदर में हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि आज के युवाओं को इन टुडेज कंटेक्स्ट व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब ह्यूमन रिसोर्स है तो हम एजुकेशन सिस्टम में तो हमारे जो स्थिति देख रहे हैं कि गांव के अंदर में बंगाल में बोली, कहीं पर बोली कि स्कूल से प्राइवेट स्कूल बंद हो रही है, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, एजुकेशन प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स तो वो वैसे ही रहेगा। चून जैसे मिट्टी में मिल जाता है, अगर सोना भी है तो वो अगर नहीं उसको आप ठीक से निकालेंगे, उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो मिट्टी हो जाएगा। इसलिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स को नर्चर करने की आवश्यकता है थ्रू रिवॉल्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम, थ्रू ऑल स्किल डेवलपमेंट। सारे सरकार के सारे आज के फोकस जो है, मैं कहता हूँ कि 5 साल तक अगर आप फर्दर आप कैपेक्स को वहाँ खर्चा नहीं भी करेंगे, क्योंकि यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। आप अगर 1 लाख करोड़ रुपया अगर R&D में लगा देंगे तो दुनिया में, हिंदुस्तान में रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हमारे जो छात्र छात्राएं जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। अभी मैं पिछले दिनों 17 नवंबर से 26 नवंबर तक आए हुए, एटलीस्ट मोर देन 10 यूनिवर्सिटी। मैं बड़ौदा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, उसके बाद अहमदाबाद के अंदर में गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, उसके बाद सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, आत्म यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद नर्मदा यूनिवर्सिटी, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी। अभी कल मैं फिर जा रहा हूँ जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, वहाँ मेरा एक मेमोरियल लेक्चर है। किंतु वहाँ पे जाकर के जब मैं बात करता हूँ कि साइंस डिवीजन से और उनके रिसर्चर से, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में इस इनोवेशन को बढ़ाने के लिए मैं 5 चीज़ों की बात बताता हूँ। 5 चीज़ें आपको बताएंगे। यहाँ पे मैंने रजिस्टर पाया कि there are 5 important things which the university must have to promote innovation and inventions and science and technology। और वो है कि नंबर 1, you must have an IPR policy। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की पॉलिसी और नेशनल IPR पॉलिसी है, 30 मई 2016 को डिक्लेयर हुई थी। वो IPR पॉलिसी आपके यहाँ होनी चाहिए। आपके यहाँ IPR सेल होना चाहिए। आपके यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स, नॉट द बिजनेस सेंटर जो मैं मॉर्निंग वॉक में देखता हूँ, यू मस्ट हैव ए जिसमें साइंटिफिक आइडियाज को नर्चर करके स्टूडेंट्स को बताया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं यहाँ पर किया था माइक्रोबायोलॉजी की एक महिला वो अपने चौधरी के संरक्षण में जो यहाँ रिसर्च हो रहा है, मैंने देखा है, रेलवे के ऊपर भी काम हुआ है, पैटेंट भी हुआ है, कि उसका कमर्शलाइज होना कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आपको इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस चाहिए, आपके यहाँ एक IPR चेयर होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोफेसर हो। ये 5 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक जो है यूनिवर्सिटी का रूटीन जो डिग्री कोर्स है, रूटीन चीज़ें चलती रहेगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा वो होगा थ्रू इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कुल मिलाकर के मैंने आज आप लोगों के सम्मुख इस यूनियन बजट 2025 के ऊपर में अपने विचारों को रखा। आशा करता हूँ मेरी कुछ बातें आपके दिल दिमाग तक गई होगी और आप भी इसके बारे में कुछ सोचेंगे, विचारेंगे कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है। और अपने विचारों को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाइए, हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स वहाँ तक पहुँचाइए। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर में ध्यान नहीं देंगे तो साइंस एंड इकोनॉमिक्स या द 2 बेसिक टूल्स जहाँ हम इन सब सारे बातों को समझ सकते हैं। और अगर सब ऐसा होता है तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भारत जो है
2047 में एक समृद्धशाली, वैभवशाली और एक स्वावलंबी राष्ट्र बन सकेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इतनी बातों को कह करके आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. The session is open for any queries. If anybody has any questions, Myself, Selim Shah from Department of Economics, Trivandrum University. And सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बधाई हो धनपत राम अग्रवाल जी को कि डाटा के आधार पर इतना अच्छा उन्होंने बजट को डिस्कस किया। लेकिन कभी डाटा लेके हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे सामने एक पिक्चर है। आपने डाटा के आधार पर गवर्नमेंट सोर्स के PLFS, तो पीरियोडिक लेबर सर्वे डाटा, उनके आधार से आपने बोला जो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 3.2%। दैट्स ट्रू फॉर द ईयर 2023-24। और हमारा देश में और एक भी डेटा सोर्सेस है जिसको ढेर सारे लोगों ने नहीं मानता, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। एंड इसके आधार पे 2020 से लेके आज तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज ऑन राइजिंग ट्रेंड एंड नाउ दिस इज 9.2%। ये दो डेटा सोर्सेस है, इसमें इतना अंतर क्यों है? एक गवर्नमेंट का डेटा सोर्स में 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट और CMI का डेटा सोर्स दैट इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड सोर्स, दिस इज 9.2% एंड दिस इज ऑन इंक्रीजिंग सिंस 2020। सो इतना अंतर क्यों है? आप पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको शायद कुछ एक्सप्लेनेशन होगा इसका। और दूसरा ये तो हमारा कुछ कैलकुलेशन के लिए, इंडेक्सिंग के लिए हर टाइम पे हम लोगों का कुछ अच्छा डिनोमिनेटर का जरूरत पड़ता है। अभी 14 साल हो गए, 14 साल हो गए, अभी तक हम लोगों का सेंसस नहीं हुआ। 2020 में तो करना था, लेकिन करना चला गया, वो भी 4 साल हो गया। फिर अब तक सेंसस ना होने से क्या होता है, ढेर सारे जगह पर नोमेनक्लेचर चेंजेस हो गया। अभी कुछ रूरल एरिया अर्बन बन गया। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का कुछ टैक्स रेवेन्यू का कुछ लॉसेस होता है, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, जगह का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। अभी रूरल कुछ अर्बन बन गया, तो वहां से टैक्स रेट का कुछ अंतर होगा, चेंज होगा, तो ये डिनोमिनेटर में कुछ प्रॉब्लम होगा। इससे ये हमारा हिसाब से तो ये 14 साल में जो सेंसस नहीं हुआ, इसका असर हमारे इकोनॉमी में क्या होगा, ये दोनों मेरा आपके तरफ से मेरा विनती है। देखिए, दोनों ही प्रश्न आपके बहुत प्रासंगिक भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं और इस पर चर्चा करना भी आवश्यक है। सीमाई के बहुत सारे डाटा को इकोनॉमिक सर्वे ने एक्सेप्ट किया है। इकोनॉमिक सर्वे आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि CMI को भी उन्होंने कई जगह रेफर किया। ये जो डिफरेंसेस डाटा में जो है, असल में क्या होता है कि डाटा को जब तक आप कॉन्टेक्स्ट उसका नहीं समझेंगे कि वो सर्वे किस सेक्शन का है, किस रूप में है, और उसमें भी फिर जैसे गीग वर्कर्स हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स हैं। किंतु मैं जरूर इस बात से एग्री करूँगा कि जब गैप दोनों के सर्वे में, दोनों के डाटा में 3.2% और 9% की अगर होती है, तो इस गैप की एनालिसिस के ऊपर मैं काम करूँगा। मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। यह बिल्कुल जरूरी है कि अलग अलग सोर्सेज के जो डाटा आ रहे हैं उनमें कोई कंफ्यूजन अगर है तो उसका भी आंसर सरकार को किसी न किसी वाइट पेपर के द्वारा देना चाहिए कि भाई ये अलग अलग सोर्सेज के ये सेंट्रल सर्वे में है और ये डाटा हैं, तो उसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन जरूर रहना चाहिए। मैं ये क्लैरिफिकेशन तो नहीं दे सकता, मैं इतना ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो भी सत्य है और मैं जो कह रहा हूँ वह भी सत्य है। दोनों का आधार है। मेरा जो आधार है वो इकोनॉमिक सर्वे जो कि पार्लियामेंट में रखा गया। पार्लियामेंटेरियन से भी मैं कहूँगा, मेरे कुछ मित्र हैं पार्लियामेंटेरियन, उनसे मैं कहूँगा कि सरकार से पूछो, वित्त मंत्री से पूछो। और ऐसे तो वित्त मंत्री जो है प्रोफेसर नागेश्वर, वो हमारे मित्र भी हैं, उनको भी कहेंगे कि जरा इस पर आप क्लैरिफिकेशन दो।
ठीक है ना। तो यहाँ आकर के आपके बीच में बात करने का तो यही है कि आप लोगों का जो फीडबैक मिलेगा उसको सरकार से बात कर जाएंगे। सेंसस के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, ये सरकार का अपना एक प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि 2011, क्योंकि कहीं पर भी कुछ कोट करें तो पता तो चलना चाहिए। पर आजकल क्या हो गया कि इतने तरह के डाटा के सोर्सेस हो गए कि बहुत सारी चीज़ें आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डाटा आजकल पर्पज ऑफ डाटा जो है वो आपका कहीं न कहीं से निकल जाता है। सरकार किस कारण से भी इस सेंसस को रोके हुए है, ये मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। और किसी का कोई प्रश्न है? Thank you, sir. That was an insightful session of the budget. I request Professor Sanjeev Kumar Majhi, sir, to kindly present sir with a memento as a token of appreciation. Thank you, sir. Moving on to our next special lecture by Professor Ajitava Raychaudhuri, sir, Professor and former head, Jadavpur University, presently Emeritus Professor, Agarwal University. May I again request Professor Parveen Sharma ma'am to give a brief about Professor Ajitava Raychaudhuri, sir. For us in economics, Professor Raychaudhuri needs no introduction. But for all of us gathered here, for the students, as you have already known, already heard, he is Professor Emeritus and Head of the Department of Adams University in West Bengal. He was former Professor and Head in Jadavpur University. But to begin from the beginning, he has been a very brilliant student and had taught the university roles both in his graduation and post-graduation level. Has done his PhD from American University, Washington. His area of specialization is trade and development issues facing the developing countries, macroeconomics and public economics. But he has been in participating in many international and national conferences, has headed many projects, had many administrative positions. But for us, what is important is he has been a teacher for excellence, a teacher who many of us would aspire to be like. In recognition of that, he has received the Shiksha Ratna Award for Outstanding Teacher from Government of West Bengal in 2018. He has been the resident scholar of Reed Hall, Columbia University. He has many publications. He has been a Fulbright Fellow, Yale University, visitor of London University, and many such honors he has received. I will request him to take the dais for his presentation. Well, I thank people of University basically for inviting me here, and especially Head of the Department, Professor Das, and our finance officer here, Devashish, and his old acquaintance of mine, Dhanpat Agarwal, who spoke before me. Now, Dhanpatji, he has told more or less everything under the sun, so I have very little space, I think. But anyway, let me just try to say whatever I want to, and I will limit myself to budget. And so it's all on budget, and even in budget, I will not highlight everything. Because if I want to highlight every point, then that's a very long talk. So I want to highlight on 4 basic issues, and then while I talk about 4 of these issues, some of the other issues will come in as I proceed. Now, one thing one has to really be very careful, that in India we talk a lot about budget, and budget is basically an annual financial statement of the government, central government. And
the purpose of budget basically is short-term management. You have a problem, say, right now you have a problem of demand supply, how to manage it. Right now you have a problem of, say, price rise, what would you do about it? You have a problem of capacity utilization low, what to do? Unemployment, basically it's all a long-term things. Budget, on one hand, short-term management, but it might have some implications that say, some implications for long-term, as you will find what kind of implications is there. And also we should remember that budget doesn't mean that it's all inclusive. Many of the policies which are taken are throughout the year. It's not reflected in budget. It comes out as and when the government, and once you can announce changes. For example, export-import policies. It can happen any time during the year because it's a global issue. GST, one of the very important things we can talk about, and so this is GST is under GST Council. So government can comment on something, can discuss these issues, for example, some of the issues which come beyond budget, and can give a signal. It's a signaling mechanism. So we must keep in our mind what's the limitation of the budget, what's the purpose of the budget, and what the budget can do. So keeping those things in mind, this is a broad scenario which Dhanpat also spoke about. If you look at this is straight from economic survey. The good thing about economic survey this time, all the these graphs are separately given in Excel files. So you can just copy and paste. So I have very little work to do. I just copied and pasted these things, helped me, saved some time. So you can see that basically the growth is highest in the emerging market and developing economies. And the world growth, it exceeds the world growth. And there are three periods which are given, 2023, 24 and 25 is the advanced estimate. Everywhere the emerging market and developing economies are outperforming the developed economies. That doesn't mean that we are doing miracles. Remember, the developed economies is basically base year. Developed economies already at a very high GDP. So suppose if you calculate something on 100, 25 is 25%. If you calculate it 1 lakh, then 25 will be very, very small. So base effect is there, no doubt about that. So emerging and developing economies, they are growing economies. So they are apparently the denominator on which you are calculating growth is lower, and there is a base effect. But that notwithstanding, there is no doubt about it that the emerging and developing economies, mostly in the Asia and some Latin American countries, and I would say India is a shining star in that, we are having apparently the fastest growth in that. I will touch upon that as I proceed. India's growth rate, if you look at this, it's peaked in 2022-3, that financial year, and there is a reason for that. It's a COVID year, so everything fell. It's base effect again. If something, the value has come down, if you calculate a rise on that, it's a jump. So that's happened because that's a peak, because already the value was low, so we scored very heavily. But then the last 2 years, it's falling. As you can see that it was 8% in 23-20, the 24-25, and 25-26. The advanced estimate it will be below 6% for that. Now, given that, the whole thing is, what should the budget do? Budget, as I said, is an annual financial statement of the government. It cannot do everything. And I will touch upon those things, and that will be my preface from where I want to speak. Now, I just quote the first highlight, as I said, budget highlight, not for one. And I quote. And this is
Again, Dhanpat ji has told about it. Some of you might have expected he will deal a lot on this tax issues. You can read this. Those who are earning 12 lakh, actually 12.75, as you should point out in the standard deductions. And I just quote, a person having income of 18 lakhs will have a benefit of 70. A person with an income of 25 lakhs will have a benefit of 1,10,000 because the rates have come. It's a good thing in a sense that we have more money in our pocket. Now, who has more money in the pocket? Let's deal a little bit on that. Before I go into this is the share of components in GDP in constant prices. What are the shares? If you look at this, it's written in this blue color. It's the highest, the tallest of these buildings, if you say that. It's PFC. It's private final consumer expenditure. What we call in our macroeconomics, call it C. All of you have read macro. C plus I plus G plus X minus N, that's the C. And if you look at this C, 2014, 15, it was 56.16%. That hasn't changed much. Up, down. In 24-25, estimate, advanced estimate is 56.8%. And if you look at the GFCF, that's the investment part. Gross fixed capital formula, the investment, that was 31-32, also somewhat fixed. And I just mentioned this valuable share. What are the valuables? Gold and jewelry. Government publishes that. There is an impression that those who are rich spend a lot of their money in buying gold and jewelry, and how much is going there. So government publishes that data, more or less fixed. Nothing much happens. So structurally, the economy looks as it is for last few years. But just to mention, which I haven't quoted here, before 2014-15, somewhere down the line, the consumer expenditure, the percentage was much higher, something like more than 60%. It crossed more than 60%. Now, why I am mentioning this figure? Because if you look at this, Y is equal to C plus I plus G, the driving force of a growth of a nation, Y grows fastest through C. C is the engine of growth, as we see. And the C is fairly constant. And the important thing in this is economic arguments of tax cuts. So, if the figure, as I said, consumer expenditure is the engine of growth, a lot of you know, and I don't want to repeat these things, a multiplier effect and so on. So, if you can increase the consumer spending, there is a multiplier effect and the growth will be faster. Now, when the tax is cut, who gets the benefit? Now, there are arguments which have been raised. How many people pay tax? It's about 10% of our population pay tax, income earners. So, only those who are income earners, they get the benefit. But that doesn't take away the fact that some people will have more income, good enough. And who benefit more? Apparently, those who are earning less, low income. Now, if we go to the next slide, think about a society, and I gave an example. Suppose there are 100 households. 10 of the households, and there is 100 crores of rupees business. 10 of the households, 10 of these households run the whole business. They are the capitalists, as we call it, the business owners. And they collectively run 70% of GDP. And the rest 90 of the households are basically workers or self-employed. And that's a reality in India. If you look at the workers, the profile of those who work, most of them are self-employed. As a pathetic scenario when you talk about self-employed. You have a small business somewhere, you run it with your family members, very low earning,
Whether you will be called unemployed or not, it's a debatable issue. And Selim was talking about unemployed. All these figures make very little sense to me, because we know that those who work in the unorganized sector are underemployed. They do not have full potential. So if you calculate the unemployment as something like a job defined as per International Labour Office ILO standard, the unemployment may be 30%. We do not publish it. Anyway, whatever we are having, debating about 9 or 3 hardly makes any difference to those who are down there and toiling hard every day, day in and day out. Now, when this is the scenario, when you cut the taxes, it may be some of them who are in this 90 will get the benefit. And what's the real focus point? These 90 people, in our terminology, has higher marginal potential to consume. So if you give them 10 rupees more in their pocket, they will spend the whole 10 rupees. Or if you give 10 rupees more of these 10 people, they will not spend at all. You have enough. You cannot go on spending when you have enough. So basically the whole idea is that if you have the low income segment, and if we give them more in their pocket, they are going to spend for sure. And that will drive up the consumption in the economy. And for all practical purposes, if the consumption is more, the multiplier effect will be more. And so the idea is, this will push the demand side, because everybody thinks the problem right now in the Indian economy is you have lots of production of electronic goods, lots of production of say cars, two-wheelers, lots of production of textiles, leather products. Not enough is bought. So it's not a question of problem on the supply side. It was a problem after COVID, because China stopped supply. Lots of problems. There was supply side problem, but nobody thinks there is a supply side problem very significant now. The problem is on the demand side. People are not buying. Who will buy? The low income. The 10 rupees in their pocket, they will spend it. And I will go next. You will see how the pattern of spending has changed in India. That's very important. Where would this go? That makes the difference. If I go have 10 rupees and I buy, say, wheat and rice, then what will happen to these non-agricultural things? Mobile phones. All of you know how important in life in mobile phones. Even in classrooms, when you do not listen to the lectures but play with mobile phones, you see know the importance of that. But anyway, going a little forward to that, if you can see this is the Indian story. Urban, and this is for the National Sample Survey report on household consumer spending. I'm trying to give you a background. This tax cut, what's the issue? Whole purpose is getting the demand up. That's what the budget is trying to do. Short term and not long. Right now, how to handle. Now if you look at this, again, 70% of the population consumes about 50% in 23-24. 30% consume another 50%. 70% of our population in urban areas, total consumption, they have 50% share. Half of them, 70%. Another 30%, another half. Inequality, as you can understand. Go to the rural segment. Little better, maybe, but similar. It's about 30% capturing 50% of the market and 70% capturing the rest. So all this budget tax cuts is going to aim is this 70%, they will spend more, and as a result the thing will improve. The 30% who are capturing the rest 50% will do nothing. Frankly speaking, they have enough. They are not going to spend. So the tax cut, there will be some money in their pocket maybe, will not change the demand too much. Maybe that will be stashed outside India, possibly, or it will be spent somewhere where we do not need. And if you go to this is the
inequality, that's the inequality, and that's I'm trying to hard. When there is inequality, tax cut doesn't benefit everybody, and the whole purpose of tax cut is to benefit those who spend. If you have a tax cut where those get the money, do not spend, no, the purpose is not served. This is a World Inequality Lab database, and you can see India's case, 57.7% of national income is captured by top 10%. And the government vehemently opposes this data, which is published by Piketty and others. They don't believe this system. I'm not going into that. There are lots of debate on this. Anyway, there is inequality. From NSS data, as you've seen, from this data, it's stuck. And this is the thing again came up. This is why inequality is there. As I said, most of the people are basically workers, self-employed. Not everybody is a businessman. Not everybody has a lot of capital in their pocket. So given that, this is a scenario which we get from the periodic labor force survey. And I'm not going again into the debate about CMI and PLFS. This will tell you a lot of things. We do not need to run anywhere else. If you look at this figure of 23-24. Helper in household enterprise. And see that our population is now roughly, very balanced between male and female. And if you look at this, 36%, 36.7% of women, they are helpers in household enterprise. Helpers. They get nothing. So you cannot expect them to spend a lot, right? And if you go by this, self-employed, and if you look at this, self-employed is a huge number. Male, less. Rural, lot more, because they are in agriculture enterprise, self-employed. And look at this, regular jobs. Regular jobs, if you look at this, urban, little better. Casual is quite high, and casual labor, as you can understand, they don't have any certainty in their jobs. And I'm not going again, I have written a paper where I have shown theoretically that if there is uncertainty, high uncertainty among households, multiplier effect is much lower. I'm not going into that. And these people, casual labor, self-employed, lot of uncertainty, and budget can be very little to reduce this uncertainty. It may be weather related. True, this budget has stressed something like giving more technological help to those in agriculture, reduce uncertainty. For urban sector, lot of people are coming to urban sector. Urbanization is growing. How do you give more certainty to those who are not in regular jobs, they are casual jobs, contract workers? How can you expect them to be a high spender in the economy? So you can push in money, doesn't mean that they are going to spend altogether. They might not. They might try to save because they don't know tomorrow whether the job is certainly there. So the problem, budget short-term management of demand has problems. Inequality is one such thing. The target is low income. But in the low income, if you look at this figure, lots of self-employed and helper in the household, casual, lot of uncertainty. And those who have uncertainty, just pushing in money doesn't mean they don't spend. So lots of ifs and buts in the policies. And again, I refer to, all of you have, many of you perhaps have read Keynesian schemes, multiplier. And all these things work when uncertainty is completely absent. All of these things which we teach in the class doesn't have a single word on uncertainty. And if this economy of India, especially the low income people, have a lot of uncertainty in their life, the Keynesian economy should be taught differently. So what we teach is a complete certain world. Everybody is regular jobs, contractual, casual, self-employed are almost very little. That world doesn't exist if we talk about India and other development countries.
So things have to change, the way we teach. Otherwise you will get a picture which you will not be able to assimilate when you see around what's going on. I will come back to this. This is a trend of earnings. See that in 2018-19, a regular worker yearly earning is 20,000. For a casual daily earning is 418, but perhaps he gets jobs for 200 days, 180 days. Think about how much. And self-employed, 13,279. So these people, we are pushing in lots of money. Even they will not pay taxes. So what will happen to them? The budget will not touch them. Anyway, let me, there are two important measures announced in the, I think they are good measures. One is 5 lakh women scheduled caste and scheduled tribe first time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crores during the next 5 years. I think this is important. Where is the job? You have technological advancement, you have robotics coming, AI coming, and everything is coming. Where is job? Unless somewhere this entrepreneurship is there, most of us either will, most of you maybe, because we are done with our job in a sense. But our future generation, for that matter, most of the people go for sales jobs, very little earning, marketing jobs, that's what's there in the market. So, entrepreneurship, if they can do it, the so-called women and this is very important, because apparently that's a very big important chunk in all. The other is the National Center of Excellence for Skilling. You know, skilling is the in thing. Whatever, I'm not telling anything against our teachers, they are devoted, but the syllabus, in many cases dated, and unless we putting new skills in there, in the competition with the world, you have to have new skills. And they are trying to build up national centers of excellence of skilling. I don't know how far this will be true or not, but if they are there, because these new skills have to be. Now, the new thinking in the UGC is that every course, doesn't matter where they are, must necessarily have an AI course, artificial intelligence. So everybody has to learn. Down the line, so those who are now there, they do not know perhaps anything about AI, and we talk so much about AI. AI is coming in such a great speed. Skill is essential. The government is taking note of that. I don't say it's bad. How much it will be the effect is different. Now highlight 2. The second highlight is a lot of people are questioning that you are talking about income tax. Suppose I have more money in my pocket. When I go to the market and look at the goods, they are so costly. And you haven't touched about that because GST, as I say, is what affects the goods which we buy. And the budget doesn't touch it. Budget doesn't touch that because GST is under GST Council. And that's under all state finance ministers are party to that finance minister. So the problem is, and let me, those of you, I don't know how many of you go to the market and buy. The worst part in last year is the vegetables, the fruits. Rice and wheat didn't change much, but the vegetables and fruits is a major thing. Conveyance and durable goods. You see the pattern in which it is taken. Now, in the budget, the only thing the government said that they have a comprehensive program for vegetables and fruits. Because that hurts people most. The whole of this current last year, what bothered people, what cut into their pocket is the vegetable prices. Because not everybody is going to buy mobile, but they have to buy vegetables and fruits. Now let me go to this, and this is something very touted by the government. The urban-rural gap, that is part expanding with the rural person sitting in a rural area,
And the person sitting in the urban area, the gap is coming down. And if you look at this, the gap was 84% in 2011-12. Now it has come down to 69.7%. In the sense that somebody who is sitting in the urban and city and somebody sitting in a village, the gap between their spending. Fair enough. Good, that is coming down. Now, let's go to this. If you look at this, I don't know how far you can read. This is in 2011-12. Out of total spending, 52% was on food. 53%. It has come down almost 5%. From 53 to 47. 6% people are spending less on food. Remember that. This is something we talk, but most of our classes and students don't know this. And in general, almost like in 12-13 years, people are spending less on food. In the food, if you look at food items, in rural areas, what has gone up is the beverage processed food, and this is important. Processed food in rural areas. Can you think of that? Somebody sitting in a village is eating processed food like chow mein or some other processed meat. Unthinkable. People are doing it. And remember, why I'm mentioning this, these are the things whose prices have gone up tremendously. And if you go to a little more on the, these are something which should be mentioned. In rural areas, people are spending so much on durable goods. As I said, mobile, two-wheelers, cycles. 4.85% to 6.48. Huge jump. And the other thing where the cost has gone up and even is convents. 4.2% was spent in 2011, gone up to 7.5 now, almost 7.5%. So see how much extra is spent on there. These are the items which matters. So tax cut, more money in the pocket. Many of these things are not GST. Unless GST goes down, prices will not come down. So when I get more money in the pocket, I go and the prices will be still higher. Because more people are trying to get these things and market price will go up. Nothing will, budget will go on this. So budget has limitation. Same thing if you look at the trend in urban, India, cities. Same thing. People are spending so much on beverages, 8.98 to 11.09. So that's the trend. Life is becoming fast. So people are going for these things more. Processed food. And remember, in cities, this is on rice wheat. This has come down from 6.6 to 3.74. So much less people are eating of wheat and rice. This is all India rich, really tight. And the other thing is, if you look at this, this is like fruits, a little bit higher, but not much. And if I go to the next, again you will see what is happening here. Durable goods, almost 2% increase. People are buying durable goods. On same thing, 4.2 to 7.5. I don't know, that's the other way. No, same story. City, villages do not matter. That's how this spending pattern is going. And as I'm trying to say, budget touches upon your disposable income, something which comes to your pocket. Budget doesn't touch upon the taxes which are imposed when you go to buy a mobile phone. There's a GST on. And prices are going up because this GST is there. And this GST is less, you cannot expect the prices to go down. And it doesn't touch that. So don't expect too much on what will happen. In fact, some of these demand will go up and the prices will be still high. Things which you have done. This is the vegetable price and fruit price. These are the things which have gone up most in the last, this year, 24-20. And just touch upon this before I go to the next section. This is how the taxes look like. Out of our GDP, if it is 100, 12 rupees is gathered for taxes. So government's earning from our GDP is 12 in 2000.
25, 26. Close, it's not changing much. Despite giving relief in the income tax, they are expecting the income tax percent will go up, or the income and direct tax from 6.9 to 7.1. So despite the finance minister saying 1 lakh crore rupees will be lost, the percentage is more. Some calculation is there. Maybe they will catch people who are evading taxes more possible. Or there will be more people who are bringing, who will be brought in the net. And this is what the indirect tax, the GST component, customs duty, GST component, largely possible. So GST is not changing, it's the percentage of the state. So this is the tax scenario which is there. Just to support what I am saying. Now let's go to number 3 thing, which I want to highlight. This MSME, medium, small scale industry, they have tiny, small and medium. One thing which has budget done, and I think that's a very good thing which has been done, and that's what is written here, and I will show the picture more. The definition of medium and small scale industry is changed. And why it is important to tell you. And the amount of loans they can get has also changed. The important thing is that if you talk to anybody, any economist, they will say MSME is the thing which creates jobs. Because large scale industries, big factories do not take many jobs because they are now getting more and more automated. Robotics, AI. So medium and small scale create jobs. Now why they are increasing the limits? This is a very important step. I would say long overdue, and what the budget has done this time is a very good thing. Why is a good thing? See how it is changed. A micro enterprise investment was 1 crore maximum. Then it's called micro. It's 2.5 times more. Now 2.5 crores, it's called micro. Small enterprise now turnover is what they are producing. Turnover is 5, double. Small 2.5 times change. Medium again something like 2.5. So why are they changing the definition? They want to make the medium legal. So it's not that you go around and you see small factories, small shops or whatever enterprise, and they have to be very small. A very small enterprise will not survive in this economy. Why they will not survive? I will show you in a minute. This is, you see that this is the average GVA means gross value added per worker. This is the productivity. The productivity of worker in medium and small scale industries. Okay? ASUAC is called the unincorporated enterprises. So as you know, this medium and small scale enterprises, we will show you this and come back. In manufacturing, which is the most important thing, there are trade and services, there are trade, you have medium and small enterprises. In manufacturing, only 16.5% are registered. They are unregistered, which is called unorganized. Unregistered is the unorganized. Now, going back to this, their productivity, you look at this is something which I want you to remember. 2023-24, if you take manufacturing, the productivity is per worker productivity is 1,12,860. So one worker in a small scale, a medium and small scale enterprise, on the average is producing goods, which is what? 1,12,860. And I will show you a figure. When you put a large industry, how much they produce. Now, this is a share of workers. Manufacturing 39% is manufacturing, 28% in trade, and 33% in service. And these are, again, I don't want to deviate, but these are not independent boxes. Services depend on manufacturing. So, apparently, this looks like independent, they are not independent. Because as you know, as you create something in a factory that needs services, transport service, financial service, accounting service. So unless the factory is there, all the services will go. So it's related. So it's not independent, it's slightly misleading. Anyway. Now this is about the large industries.
And there is a difference between worker and persons. Just because their data is given for both. Workers is workers, wage. Persons means managerial persons. So in a large factory there are workers and they have managers. Various capacities, deputy manager, work manager, floor manager, all kinds of officers. And the gap is, as you can see, this is the numbers of workers and numbers. So roughly, as you can see, that there is a gap of about 60 lakhs workers in managerial roles. Now the next one, I want to just look at this. This is the gross value added per person engaged. So in the small industries, it's a worker. In large industry, the data is given per person, including workers and managerial staff. And as you know, managerial staff you can get rid of, and this is something which I will talk about in a minute. Look at the amount which they produce per day. In 2022-23, that's almost 3 years data behind. We were producing something like, you can read that, it's about 11 lakhs 87,920. And what is the small scale factory is producing? 1 lakh something, right? I just mentioned that. So what was their data? Look at their data, they are producing in manufacturing 1,12,860. And what they are producing in large factory? As I said, 11 lakh 87, or 10 times. And we get rid of the managers, only workers 14 times. So a large factory is 14 times more productive than a small. And our future, if you read around, MSME, everybody, from politicians to bureaucrats to economics. See, our future is MSME. And MSME, their productivity is 1/10 or 1/14 of a large scale. So will they survive? Will they survive in this era where their productivity is so low compared to large? And that's where this step which the budget has taken, increasing the size of MSME, is crucial. Because as all of you know, when you increase the size, there is something called scale economies. When the scale of production goes up, we have paid about economies of scale, right? Increasing scale, decreasing scale. So there will be increasing scale. That will happen when the scale increases. That's exactly what the budget has done. Unless this was done, this MSME will have a terrible future. Because the whole idea that the MSME will be somewhat like, as you know that many of these large scale factories, they produce at the subcontract. You go to your nearest shop and take a cosmetic, anything, any cosmetics. There's a large production, Hindustan Lever, Procter & Gamble, ITC, and you look at the label, it says that product, from toothpaste to any cosmetics which is Fair and Lovely cream or shampoos, conditioners. In small words you will find it written. Produced under license by an unknown company, completely unknown. That's a small scale company. They do it for various reasons. I'm not going to this. That's the reality. Major branded products are now subcontracted to small scale. That's how they survive. Now, given the productivity differences, they will not survive unless they have a scale, larger scale, so that they can enjoy scale economy. That's the point. That's the need of the hour. You can be subcontracted with a large brand, but after all, you have to be productive. And that's what the budget has tried to do. Only time will tell what is important, but that's a right. And I mentioned everything what I said, so I'm not repeating. Now the last fourth point, so that you will be spared from looking at all this. After this, we will go for lunch. So that's a thing. That we have food for thought, then food, real food. Okay. Now this is also mentioned that there are two ways the future can be made.
One is physical capital, right? Better machines, more factories, more residential units. Construction is very important. In our capital, again macroeconomics. In our capital, physical capital, houses and residences are there, not cars. Cars are durable consumer goods. Residences are not. They are capital goods. They are included in this capital. So physical capital includes your machines, factories, as well as all the houses which are there. And the other thing is human capital. Two sources, human or physical capital. Now there is one thing which is done, and this has escaped a lot of attention. They have changed the definition of capital. How much is going for capital formation? Now they are saying, and this is something which I want to read, they have a term which is called grants in aid for the creation of capital assets. So 100 days work, right? Rural. MGR, all of you know this, right? Mamata Gandhi. If you look at the terms of MGR and GST, it's apparently meant to create some capital. Irrigation projects, roads, etc. Hardly that is true. How much capital is created by MGR and GST? There is a wage component as well. And the wage component is not capital, that's revenue expenditure. And the problem is, if you take all the expenditure which is there for MGR and GST and call it capital expenditure, you are inflating. You are inflating the whole thing. And let me show you how much is inflated. Grants in aid for creation of capital assets, the figure is not very small. It's about 4,27,192 crores of rupees. And capital expenditure is 11,21,000. And if you go by the percentage, this is the figure. This thing, 1.2% is for projects like Mamata Gandhi 100 days work. Can we call it really a capital expenditure? When there is a big component of wage, which is revenue expenditure, not capital. But they are mixing it up. And so now the government data is showing that 4.3% of the total budget goes for capital expenditure. That's for investment. Out of that, 3.1 is the standard definition. Factories, construction, houses. 1.2 is now brought in from such projects as MGR and GST. So actually 3.1 should be the figure, a standard definition. Now it's shown as 4.3. So see the gap. So the government budget will say we spend so much on building capital. Actually, it's mixed up with things like which you just mentioned, where there is a revenue component into it. That's not permitted. But the true definition of your basic economic theory. About human capital, nothing much is taught, but I mentioned one thing. You know, there is a scheme which was mentioned in the last budget, internship in government and private organizations. What is internship? That you go to a private company will take you. They will give you something like, I don't know, 5,000 rupees per month. And the government will subsidize it. You are getting skills. So the whole idea is that a lot of people will get skills by working in real companies, and government departments will also. The big scheme announced. Because skill is the main thing. You need more skills. Now, the unfortunate thing is, in 2024, last year's budgeted expenditure was supposed to be 2,000 crores on this thing, whereas like you, undergraduate, graduate students can go to companies and companies will take it, big companies. Actually, the government spent 2,000 crores of budget, they spent only 3. So it's almost like, how much? 15%? 18%? So what happened? So the last budget, so much was talked about this internship, as in that budget, you remember, it was said to be a game changer. That you are going to a big company, you are learning and doing that, so you may be in future, or you can get some other job because you are getting the right kind of stuff. Unfortunately, the spending was only 380. Now, this season,
The budgeted amount is 10,891 crores, 5 times more than what was there in 2025. Now, if that is spent, fine. If the companies come forward as well as government departments come forward and take all of you, if there will be competition, I don't think everybody will be there, but many people will get internship in that. Internship is a major problem, right? You don't get internship easily. But if this thing is really done, lots of internship will be created. It didn't take off last year. Now it is 5 times more done. If it is done, wonderful. But why only 3 crores was spent? The explanation is nowhere there. Again, question marks. And the last thing which I want to say is education scheme is that. The last thing I think is also important. There were about 70 life-saving drugs is made customs duty free because they were imported drugs. There are 2 types of drugs which are there. One type drug imported, very costly. The other type of drugs are produced in India and they do not pay customs duty. Those drugs, especially, there were 36 drugs which are cancer. And cancer is the #1 disease apparently now. It's affecting so many people in so many ways. 36 are now customs duty free, so the cost will come down tremendously. And so 70 life-saving drugs. That matters for health of not the rich, but what I'm talking is 90% of the people who go for government hospitals and they do not provide these drugs because they are costly. If they come down, everybody will get that. That matters for your health. I think this is a very good step which has been taken. So something is very good in budget. The major problem is implementation. If the government hospitals can now give all these costly drugs which is only given in private hospitals and only rich can provide, if common person can get it, the average human capital will be better for all of them. And there are other points in budget which I won't take up because in 1 hour basically we cannot speak more than that. So maybe some other time. Thank you so much, sir. The session is open for any queries. If anybody has any questions. My name is Sanjeev Kumar Maji. I am the faculty of Economics Department, this institution. So thank you very much, sir. You have enlightened us with your ideas, lots of thoughts with regard to the Union Budget 2025. Definitely it will be fruitful, effective, as well as it will be productive to all the students who have participated today. Basically, I have also just gone through this budget. Actually, one thing I found in this budget, as you have already highlighted, that this budget has more or less tried to provide some jobs. As in the budget, this particular budget, it has 4 pillars. So far my knowledge is concerned. One is agriculture, then export, then investment, then MSME. And all these are the job creators. I also agree with this because agriculture sector also provides jobs and MSME also that will provide job in rural area as well as in the urban areas. Even investment means if investment is made in rural area or urban area. Like that export sector, we have also one important sector, that is the export sector. That sector also will help to create some job. It is okay. But when I am looking to my students, when they will complete their degree from the institution. But here government is failing by providing job in public sector particular or government institutions like when they complete their degree. Then there are no jobs in the government sector. Then where they will go? So this is one kind of discontentment from my students. So I am looking in this way. So
during the farewell, actually we were bidding farewell to the students. So at that time I think deeply what they will do, what my students will do after passing. So this contentment also with me also. So let me clarify. Thank you. Sir, good morning. Good afternoon. I think, sir, I want to. Yeah. Sir, thank you. It was really wonderful. Sir, I would just like to share one point with you. When the point that you made out that there is a huge difference between the budget estimates and the revised estimates. And sir, if we delve even deeper, we find that the differences increases further when we go back to the actuals. Because what we see today is we get the budget estimates for the coming year, and we have the revised estimates for the current year. But when and we get the actuals for the previous year. Now, like I would just like to, we from the Northeast, we are very, means at least I am, and I believe many of my colleagues are also, we are very prone to what is the central budget doing for the Northeastern region. And we have the Ministry for Donor. We have several schemes, be it NEC, IPS or PMDY or whatever. So very interesting, just a point for information of my students also. For the last 2-3 years, in the budget estimates, the allocation is around 5,900 crores. This year also it's more or less similar. The revised estimates, when we see to it, it's around 4,000 crores. So from 5,900 crores, it comes down to 4,000 crores in the revised estimates, which is almost 33% less. But when we look at the actuals for 23-24 is 1,900 and actuals. The actuals for 23-24 is 1,900 crores. So I think this is that is happening is winning in this series. A kind of action taken place which are mentioned in the budget document as an a kind of action from the activity mentioned in the budget document as an action further that what is from the announcements and the realities. This is just how we think that I the announcements and the realities. This is just how we think that I sort of share. Let me answer the result. Sir. So there's one question which is there, which was about where will the students go after government jobs is. See, the problem is the government is shrinking in GDP. And the government is shrinking. And the government jobs will also shrink. When the government is shrinking, that's the government jobs will also shrink. So what they are trying to do, that's a start clear self-employment. So what they are trying to do, self-employment, skilling, internship. Whole thing is that is the private sector more about, and let the students think about more about now some kind of in fact our generation we are so comfortable with government jobs. In fact, the next generation we are so comfortable with government jobs and that's different. The next generation because whatever the government talks about private no way because whatever the government talks about private investment should go up. They will provide jobs for private investors. And so government doesn't impose it as such. And you know, somehow or other unless the mindset changes and problem with entrepreneurship, startups as you can say. The number of startups will die and the number of startups will start. And very bad. It was steady state startups. M and BART somewhat similar. So the startups slightly increases in their government, but then it shrinks. What else? And there is a huge pressure in the government self-shrinking. And there is a huge pressure, as you can see. The new president has come in the United States and our customs duty in so many of them. A new president has come in the United States and our customs duty in so many of them. We need help in our way, but we have to. And this kind of political economics without political economics. And this kind of political economics without political economics is that my students also things. I don't know. In fact, when I look at my students also, maximum number of jobs in private sector is not sales, and the maximum number of jobs in private sector is not sales.
is 10,000 and 12,000 is fine. They are getting some. Pay is 10,000 and 12,000 a month. They are getting some. After overall India's structure is self-employed. Overall India's structure is self-employed. Very low productivity women. Both women are being unpaid work for the household work, and that is taken to be some kind of a labor force, and that's published in peer. So think about the way things are now. So many women are sitting at home and they are branded as in labor force because they are helping without getting money. They are helping the family. What kind of help? I mean, help is what? You are cooking, you are giving some, something when they are taking rest, you are helping them to take rest, making their beds properly and so on. Is that what? So, things are, to my mind, is tough. And given the way AI is coming, whole thing is really, I don't know, I don't have an answer. The government itself is should think about what's happening in the United States. Musk has come and he's chucking out government employees left and right. One can believe it. People at the age of 40, 50, 60, the family and everything, just asleep. From tomorrow you 8 months salary. 8 months. What will happen with 8 months salary? It's called golden handshake. So there has been a golden handshake, so many will be thrown out of government jobs. And if that is then something to come in future in the world, God knows. And he wants everything to be done by AI and other things. That's what Elon Musk is doing. And India will not be far behind, I can tell you, because we have to follow what the world order is. China is facing the same issue. Anyway, I don't want to discourage anybody. I am basically infinite optimism. So I guess things will somehow or other change. After all, you cannot expect that the human beings will move around without a job and survive. So something has to be there. How things will change, how the entrepreneurship will move, how the mindset of our younger generation will change, they will be able to tell more. They should not be taught the same way we are taught. That there is a government job standing there, go and get it. Things are not there. I am not ignoring. You are better placed about Northeast than me. I mean, there are not only Northeast, there are several items where you will find that the actual is more and the revised estimate is much less. And so, why it's happening? And the problem is, action taken report is there in the budget. That's there for last few budgets. You see the action taken report. So the action taken report says, these things will be there. So much less is spent. So the government is looking into the matter. So after looking into the matter, what is the outcome we don't know. So I will ask you, if you can find some outcome from government looking into the matter, please let me know. I will be enlightened with that. Okay? So again, means just to carry on with this, I don't know whether this happens particularly in this ministry is because of the late release of funds from the center. Whether this is There is a single central project, either central sponsored project or central project. Okay? Where this problem is not there. Money is released in the last 2 months, Yes. February, March. So that's nothing new. But sir, what is the point is most of the schemes under this ministry are of capital intensity, and these are particularly more built for this capital intensity. And these are particularly more built for this infrastructure. So, And it will be reimbursed when the money comes. Who will do that? This is not only for your donor, this is true for so many of the government departments, especially CSS and central government, which are shared by the state as well. This problem is there. And government shared by the state as well. Our GST collection and income tax collection, government said our GST collection
and income tax collection picks up in the last year. Unless that money comes, they will not pay. And that's a catch-22 position. Unless that money comes, the government gives the advance. Now, state finances, and some of the cases, we will give the advance. Now, state finances is such a shame. What is happening? We will give the advance so that we won't start getting the money. So what is happening now? I know vendors are doing what without getting the money. That's the problem, and that is rising difficult day by day. And now the government in this case is saying difficult day by day. And now the government in this case is saying that maybe these doesn't work very well. Because there is, as you know very well, this doesn't work very well. Because there is no single size cannot solve. PPP low cannot be PPP and PJs cannot be a problem. Government talks about different but doesn't come out as a solution. That's what the biggest problem. Government talks about PPP but doesn't come out with a solution. What kind of PPP? Your case is as good as mine. So, your case is as good as mine. Thank you, sir. Do you have any more questions? Any other question? Ajitava? Very question. Well, Shudro, there are two things which happens when you don't find questions. Either they haven't understood what I said, or I have spoken so well. So let's take a second. You have spoken very well, so they don't have anything to say. So we'll have lunch then. I'll be happy to have. Thank you so much, sir. I request Dr. Dilip Kumar Rana sir to kindly present sir with the memento as a token of appreciation. Thank you so much, sir. Now I request Professor Paramita Saha to present the vote of thanks. Propose a vote of thanks formally. I must thank first those who are not in the dais. But first and foremost, Professor Ajitava Raychaudhuri and Dr. Dhanpat from Agarwal, the two distinguished speakers of today, was mesmerized us with linking the budget with the fundamentals and eliminating what we should expect from the budget and why what kind of limitations budget has from the budget and why what kind of limitations budget has. Mr. Sir for that. Ashish Pan, our finance officer, and Mr. Ashish Pan, our finance officer, and education possible Dash, the head of the department, the vice chancellor in charge possible. And time with us, the vice chancellor in charge was present here at hand. Time with us for meeting the support staff present here at hand. Volunteer. I thank also the support staff and the volunteer students volunteer.